بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام علیکم ویورز، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عید قدیر مبارک۔ میں ہوں سعود ظفر، مائی ٹی وی کی اس لانچ ٹرانسمیشن میں، جو کہ امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کا یہ ٹی وی ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ ہوسٹنگ میں میرے ساتھ دیں گی شفا عباس۔ Welcome everyone, Assalamu alaikum and Eid al-Qadir Mubarak. My name is Shifa and my co-host here, Saud Zafar. For the next 3 hours, we hope to take you on this journey with us, the inaugural transmission of My TV, Medics International Television. Over the last 25 years, IMI has grown from a grassroots local effort to a global initiative. We span 5 continents, 20 countries, and have impacted millions. As you heard from the verses of the Holy Quran, we derive that same inspiration, and whoso saveth the life of one, it's as if they've saved all of humanity. We've worked on health and medical services, education and professional development, humanitarian services, and advocacy, and are now proud to announce the launch of our television channel. So again, we'll highlight IMI's work, invite some special guests, IMI leaders, and give you a sneak peek on what's in store for My TV. Let's watch a short clip about IMI. دنیا بھر میں 2.7 بلین افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان آبادیوں کے لیے صحت، خوراک اور صاف پانی کا حصول ایک جہد مسلسل ہے۔ یہاں سسکتی انسانیت ہر لمحہ نم آنکھیں لیے کسی مسیحا کی منتظر رہتی ہے۔ ہم ہیں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل۔ ہماری کہانی کا آغاز آج سے 25 سال قبل ہوا نیو یارک کے ایک بیسمنٹ سے، جہاں انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار کچھ دوستوں نے چھوٹے سے سرمائے لیکن بہت بڑے دل کے ساتھ IMI کی بنیاد رکھی۔
और फिर देखते ही देखते खिदमत का ये कारवां बढ़ता चला गया। आज पाकिस्तान, भारत, इराक, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत दुनिया भर में इमामिया मेडिक्स के 55 प्रोजेक्ट्स कामयाबी से चल रहे हैं, जहां सैकड़ों IMI रजाकार तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी, कुदरती आफात और जंगजदा इलाकों में परेशान हाल लोगों का दुख बांट रहे हैं। IMI अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा इदारा है जो रंग नस्ल और मजहबी तफरीक से बालातर होकर दुनिया भर में समाजी और फलाही काम अंजाम दे रहा है। IMI एक नजरिया है जिसकी असास ने इंसानियत पर एतबार को मजबूत किया और दुखी दिलों को यकीन दिलाया कि कोई उनका अपना भी मौजूद है। IMI के अजीमुशान और मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं गुज़िश्ता 12 साल से इराक में जारी अर्बईन मेडिकल मिशन, जहां दुनिया भर से आए 150 से ज्यादा डॉक्टर्स 1 लाख से ज्यादा ज़ायरीन का मुफ्त इलाज करते हैं। 16 साल से जारी हज मेडिकल मिशन, जिसमें हर साल तकरीबन 50,000 आज़मीन का मुफ्त इलाज किया जाता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आशूरा मेडिकल, सर्जिकल और ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद। भारत के कई शहरों में गेट वेल चैरिटेबल क्लिनिक्स का नेटवर्क। अफ्रीका के पसमानदा मुल्क बर्किना फासो में स्कूल, क्लिनिक और साफ पानी के कुओं की फरहमी। इराक में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला। नेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम न्यू जर्सी, जिससे 36 ममालिक के 700 से ज्यादा डॉक्टर्स मुस्तफीद हुए और आज अमेरिका और बरतानिया में कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान, भारत और इराक में 5,000 से ज्यादा तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप्स और कर्ज हसना। पाकिस्तान के कई पसमानदा इलाकों में कायम मुफ्त क्लिनिक्स और एम्बुलेंस सर्विस का नेटवर्क हर रोज इंसानी जानें बचाने में मसरूफ है। सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लाहौर और कराची कैंपसेस पर तरक्याती काम तेजी से जारी है, जबकि IMI का इंतहाई फाल खवातीन विंग तालीम, सेहत और दीगर समाजी कामों में मर्द रजाकारों की शाना बशाना खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा बेशुमार शोधा की लवाहिकीन, बेवाओं और यतीमों की किफालत भी IMI अपना फरीजा समझकर अदा कर रहा है। आज इस मौके पे आपने इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल की ये वीडियो देखी, जो हमने आपको जिसमें बताने की कोशिश की है कि इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल क्या क्या काम कर रहा है, दुनिया के कितने ममालिक में उसकी प्रेजेंस मौजूद है और किस किस तरीके के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल पिछले 25 साल से ज़ायद के अरसे में इन्हें सरअंजाम दे चुका है और दे रहा है, और ये सब आप ही के तावन से सब मुमकिन हो पाया है। एक मरतबा फिर हम दोनों की जानिब से, हम सब की जानिब से, इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल की जानिब से ईद क़दीर मुबारक। Yes, I'm very happy and जी शिफा। a very happy Eid al-Ghadir Mubarak to everyone, to all of our viewers. Now, if I can ask you, Saud, to please introduce the next segment. नेक्स्ट सेगमेंट से शुरू करेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक भी है, और ईद गदीर के हवाले से जो सबसे ज़बरदस्त बात हम सुनते हुए आए हैं और कहते हैं, और जो रसूलुल्लाह का कौल था
من کنت مولا فہذا علی مولا. انہوں نے کہا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں, انا مدینۃ العلم, تو علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت ایک ایسی وجیح شخصیت, ایک ایسی نالجبل شخصیت کہ جس سے شاید ہماری نسلیں, پچھلی نسلیں, آنے والی نسلیں, موجودہ نسل, شاید ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں جتنا اٹھا سکتے تھے. یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ اس سے قبل میں دنیا سے چلا جاؤں, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. واقعہ معراج میں اتنا بڑا واقعہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا, اس میں جس شخصیت کی ذمہ داری ٹھہری کہ وہ رسول اللہ کی جگہ ان کے بستر مبارک پر سوئے, وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. امامیہ میڈکس انٹرنیشنل اور جو ایم آئی ٹی وی یعنی میڈکس انٹرنیشنل ٹی وی, مائی ٹی وی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا موٹو بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ سائنس, طب اور جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے, اور خاص طور پر مسلم دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں سے وہ اپنا جو ہمارا تابناک ماضی تھا اس کو دوبارہ سے پانے کی ہم کوشش کر سکیں, اور نئی نسل کو, ہماری موجودہ نسل کو بھی اور نئی نسل کو علم ہو کہ ہمارا ماضی کیا تھا, اور کتنے ہم بڑے بڑے سائنسدان مسلم دنیا سے انہوں نے دنیا میں دنیاوی تعلیم کی, سائنسی علوم میں ان کو ترقی بخشی ہے, اور پوری دنیا آج ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. جی شفا. It is exactly in the work that IMI does that we established Medics International Television, the inaugural transmission that you all are tuned into today. And it's the channel's goal to preserve the scientific advancements, the historical achievements of our communities, and bring to you just the highlights of the massive amount of work that is happening globally. And it's under the guidance and of course the shade and the knowledge that was given to us by our holy Imam Ali, and who we celebrate in today's celebration of Eid al-Qadir. And so we have a very special segment coming up. If I can introduce our next two guests before I have Saud take it away. Sure. With an interview with each of our guests. Our first guest is Sheikh Abdullah Jaffer. He is Hafiz-e-Quran, president of Muslim Youth League Canada, the youth wing of Minhajul Quran. He has a master's of neuroscience, neural pathways, and is pursuing a PhD in neuroscience from McMaster University in Canada. We also have the great opportunity to be joined by Dr. Taqi Abdi. He's an Indian-Canadian physician, a world-renowned poet and scholar of the Urdu language. His works include compilation of Persian literature, or Urdu literature, work on poets of the Hindu religion, the studies of Mirza Dabir, Mir Anis, Faiz Ahmed Faiz, and Allama Iqbal. So welcome to both of our guests, and thank you for coming to our platform to celebrate Eid al-Qadir with us. اب دونوں حضرات کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر میں آپ کی اجازت سے شیخ صاحب سے تھوڑا سا, کیونکہ ایز اے سائنٹیفک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے ناطے اگر میں ان سے گفتگو کا آغاز کروں تو بہت عمدہ رہے گا, بہت عمدہ رہے گا. میں بھی سننے کا آپ کے جو ہے متمنی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ویلکم. السلام علیکم, عید غدیر مبارک. اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ یور سیلف, نیورو سائنسز, اور یعنی جانے کیا کیا کر رہے ہیں آپ, اور کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا فیوچر میں, اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ہم روزانہ بہت کچھ پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لوگ ان کے اقوال شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کی جو نالج تھی اس کو اور ان کے جو اقوال تھے اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش اپنی سی کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت کیا ہے, خاص طور پر سائنس اور دین کے حوالے سے, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سائنس ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک, عید غدیر. ماشاء اللہ آپ کو بھی, سب کو, حضرات کو عید غدیر مبارک. to everyone who's listening, who's tuned in here.
live to this transmission. Jazakallah khair, first of all, to the organizers for inviting me, for allowing me the privilege to be able to speak on a personality such as Sher Khuda Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. I usually, and whenever I speak about him, whenever I speak about science especially, I always begin by clarifying a very common question that a lot of the students, a lot of even my elders have. One of the pitfalls of the current generation is we try to justify Islam through science. And that is completely the wrong way of looking into it. Exactly. Science and Islam are two separate entities, and Islam pre-exists science in any degree, in any variation that you wish to look at. If you ever try and your perspective is, oh, mashallah, another new fact is proven in Islam, it is a weakness in our iman. Why do we need current science to prove the validity and the sanctity of Islam in and of itself? So that is a misconception I want to clear up, and that's my personal perspective. Now, how does one reach that perspective? One reaches that perspective by first foremost understanding where ilm originates from. The origin of ilm is within Islam, and Islam originates when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And by establishing the very simple fact that the gate of knowledge is Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, the only way one can even enter the realm of ilm is by first knocking on the door of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Now, how does one go about doing that? Inshallah, I'll begin here. The only way that anyone ever opens the door, and this is, I'm not comparing anything to Hazrat Ali, but this is just common knowledge, is through adab, is through understanding, is through waiting in line, is through truly understanding what the guard of that door wants for you to enter. We try to go on, and we've got many scholars and we've got many scientists who try to go out and they, I don't want to name any names, but they go against the very sanctity of the one of the, if not the most important companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then they try to seek ilm. How can you even touch the boundaries of ilm without first getting permission from the guardian of ilm himself? And that is Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. As you said, I'll reiterate that same quote here before I end this little answer. I know more of the gateways of the heavens than I know of the gateways of the earth. If Hazrat Ali, my yaqeen, it's my iman, if Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu did not say these words, today there would be no astronaut in the world. Exactly. He opened the door for the ilm to be sought by the humans of today. बहुत ज़बरदस्त बात की है शेख साहब. डॉक्टर तकी आबदी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. शेख साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए आप किसी शहर में, किसी घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं. और मदीनातुल इल्म को जब आपको जानना है तो फिर बाबुल इल्म को जानना ज़रूरी होगा. बाबुल इल्म के बारे में, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में आपसे जानना चाहेंगे. आप बज़ाते खुद शायर हैं, शायरी से शगफ रखते हैं, जिस तरह से आपके इंट्रो में भी हमें शिफा ने बताया. हम हजरत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में क्या जानते हैं? क्या हमने उनसे वो कुछ हासिल किया जो वो चाहते थे, जो उनकी ख्वाहिश थी कि मुझसे पूछो मैं बता सकता हूँ, लोग मुझसे पूछते नहीं हैं, शायद उनकी ये शिकायत थी. तो जो कमी बेशी रह गई डॉक्टर साहब, उसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब जफ़र साहब और शिफा साहिबा, और अभी जो शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा, मैं बिल्कुल आपके जो है मुतमईन हूँ कि साइंस और इस्लाम, कुरान मजीद ये कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, और साइंस जो है गैब पर ईमान नहीं रखती. तो मालूम यह हुआ कि कुरान मजीद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हिदायत की किताब बन सकता है जो गैब पर ईमान रखें, और साइंस ये कहती है जो महसूसात हैं, जो मेरी आंखों के सामने हैं, उसके सिवा मैं किसी और चीज़ को नहीं मानती. तो साइंस बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मसला ये है कि आज हम जो टॉपिक
बात कर रहे हैं आज की 21वीं आपके जो है सदी में और इस ग्लोबल विलेज में, उसकी वजह यह है कि नस्ल जवान जो है वो साइंस का दूध पीकर पड़ी है, दूध पीकर साइंस का बड़ी हुई है। वो साइंस की आंख से देखती है, वो साइंस के कान से सुनती है, वो साइंस की जबान से बोलती है और वो साइंस के हाथों से टटोलती है। तो सवाल ये है कि हमको उनको मुतमईन करना है। साइंस जो है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम मंजिल पे पहुंचने के लिए पहले अपने घर से मेन रोड तक आने के लिए अक्ल का फायदा उठाते हैं और उसके बाद से आपके जो है हम वो जो इश्क होता है, वो जो जुनून होता है, उसकी एक जस्त लेकर अगर हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हमको साइंस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमको आपके गैब की जो हमारी दीन में कैफियत दी गई है। तो अभी जो बातचीत हुई कि इल्म का दरवाजा, देखिए मौला अली ने जो ये जो हदीस पैगंबर अकरम है कि ये अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो ये मसले को समझने के लिए मैं 1 मिनट ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये चीज हुआ कि कायनात की हर खुशकोतर चीज आपके क्या कहते हैं कुरान मजीद में, यानी उसके 114 सूरे में है और 114 सूरे का जो निचोड़ है वो सूरह फातिहा में है की 7 आयतों में। और ये भी फरमाया गया कि सूरह फातिहा की जो 7 आयतें का जो निचोड़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो निचोड़ है वो आपके लफ्ज बिस्मिल्लाह में है और लफ्ज बिस्मिल्लाह का जो निचोड़ है वो हर्फ बे में है और जो बे का जो निचोड़ है वो जो नुक्ता बे के नीचे दिया जाता है उसमें है। और हजरत अली फरमाते हैं कि मैं वो बे के नीचे का नुक्ता हूं। तो अब आप आइए क्या कह रहे हैं अली, यानी अगर हमको फैलाया जाए तो हम बे बनेंगे, बे से बिस्मिल्लाह बनेंगे, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनेंगे, जहां से हम आपके सूरह फातिहा बनेंगे, उसके बाद हम पूरे कुरान। मानी यह है कि इस इल्म के दरवाजे को जो मदीनत, दरवाजे से इल्म आता भी है, दरवाजे से आदमी आता भी है, दरवाजे से आदमी जाता भी है, यानी जो रफ्त व आमद है पैगंबर अकरम की, यानी इल्म लदुन्नी के, देखिए 2 किस्म का इल्म है। एक है इल्म में एब्सोल्यूट आपके नॉलेज, जिसको हम आपके जो है क्या कहते हैं, वो जो इल्म है इल्म मुतलक, वो सिर्फ खुदा का है। दूसरा जो इल्म है जो पैगंबर को दिया जाता है, जो हुजूर को दिया गया, वो इल्म आपके मुतलक पैगंबरी है। इल्म मुतलक अल्लाह अल्लाह है, वो पैगंबर नहीं जानते, लेकिन इल्म मुतलक जिसको इल्म लदुन्नी कहते हैं वो आपके पैगंबर अकरम के बाद इमामों में आपके जो है ट्रांसफर हुआ। इसी वजह से तो कहा गया कि जो है अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद, यानी ये जो औलाद आपके अहले बैत है ये लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये जो 1948-70 इयर्स बैक जो बिग बैंग थियरी आई कायनात के बनाने के बारे में आपके जो है, तो एक नुक्ते के बस्ट होने से हजारों कायनातें बन रही हैं और फैल रही हैं। जैसे आप एक बैलून लें, उसमें जो है आपके कुछ नुक्ते लगाएं और वो बैलून को आप जैसा जैसा इन्फ्लेट करते चले जाएंगे, ये आपके क्या कहते हैं फासले बढ़ते चले जाएंगे, तो ये कायनात फैल रही है। तो अभी जो मौला अली के बारे में की बात हुई कि मौला अली ने ये फरमाया कि देखो सलूनी मुझसे पूछ लो जब तक कि मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। उसके बाद का जो जुमला है उससे अहम तर है, जो हम लोगों को ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूँ। मानी यह है कि कुरान मजीद की ये जो आयत है कि तुम तस्खीर ज़मान और मकान सुल्तान की वजह से कर सकोगे, और अल्लामा इकबाल कहते हैं सुल्तान वही इश्क है, तो हजरत अली वही चीजों को बताने की कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है वहीं पर जो है कूफे में हजरत अली खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि देखो मैं तुम्हारे घरों को, ये जो आबशार हैं, ये जो झरने हैं, इनसे मैं तुम्हारे घरों को रोशन कर दूंगा। लोग मुस्कुरा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। देखिए जॉर्ज जॉर्डेख ने एक बड़ी उम्दा चीज कही कि अली बड़े खुशनसीब इस तरह से थे और बड़े आपके, उनको क्या शरफ नहीं था कि जो नहीं मिला, यानी पैगंबर अकरम के आपके आम थे, इसके अलावा हजरत फातिमा के शौहर थे, हसन और हुसैन के आपके जो है बाप थे, इसके अलावा आपके एक मुजाहिद थे, एक इबादत गुजार थे, एक बड़े खवी आदमी थे,
उसके बाद से जॉर्ज कहता है लेकिन एक लिहाज से बड़े बदनसीब थे कि उनको वो जमाना नहीं मिला जो अली को समझ सके। यही मसला, पैगंबर अकरम को तो सहाबा मिले, लेकिन ये 40 साल के बाद, 35 साल के बाद अली को वो जमाना नहीं मिला। तो जब इसी जबरदस्त पॉइंट पे डॉक्टर साहब, इसी जबरदस्त पॉइंट पे अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपके जो है क्या कहते हैं कि तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे घर कैसे रोशन हो सकते हैं आबशार से और झरनों से। अली कह रहा है 1400 साल पहले, तो वो लोग हंस के, बाज एक शख्स उठ के कहता है ये बताइए कि मेरे सर में कितने बाल हैं। तो अब हजरत अली फरमाते हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। इसी पे मैं चाहूंगा कि मैं शेख साहब से भी इनपुट लूं। शेख साहब, जो हजरत अली करमल्लाहु वजह का कहना था कि, या उनके बारे में लोगों का कहना कि शायद वो जमाना उनको नहीं मिला, शायद सही जमाने में वो नहीं थे। अब आज के जमाने को हम देखें, मिलियनेयर्स बल्कि बिलियनेयर्स जो हैं वो एक के बाद एक रॉकेट पे दुनिया से बाहर जरा 5-6 मिनट का चक्कर लगा कर आ रहे हैं। चांद को एक नई दुनिया, चांद पे आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं जी। शायद अब तस्खीर करने का जो कुरान शरीफ, आप हाफिज कुरान भी हैं माशाल्लाह से, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो आसमानों को और जो दुनिया और कायनात जो खालिक़ कायनात ने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है, उसको तस्खीर करने के लिए जो हमें कहा गया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इंसानियत को कहा गया कि भाई तस्खीर करो। और फिर रसूलुल्लाह और सारे नबियों के पास इतनी नॉलेज थी, और फिर हज़रत अली की शक्ल में हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत कि जो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मुझसे हासिल करो, मुझसे पूछो। तो क्या अभी हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि जहाँ से हम उनकी शख्सियत से, उनकी नॉलेज बेस से फ़ायदा उठा सकते हैं? शेख साहब, mashallah, it's a very good question. And just to add on to what maybe I tried my best to explain. No, I understand Urdu. I usually don't like to answer in Urdu just because that's perfectly fine. That's so perfectly okay. Yeah, inshallah, I'll answer in English. But one of the things that Dr. Saab also mentioned, and it brought a quote to me, Kumail, who's a very, Hazrat Kumail radiallahu ta'ala, was a very staunch friend, very strong friend of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. He noted that on more than one occasion, Hazrat Ali Mola, he used to punch the earth, and he used to put his fist into the earth, and he used to say, Kumail, this earth understands me more than the people who live on top of the earth. And I think that isn't just a sentiment that existed 1400 years ago. Unfortunately, that's also a sentiment that exists today. Now, going on to your question, if we can actually gather the ilm. Now, science is of two types, and Dr. Saab also touched upon it. One is something tangible. There's also an intangible science. And the only way to obtain true tangible science is understanding the intangibles first. So what is intangible science? The intangible science helps you understand the hikmah, the hakika, the reality of this life. It helps you understand why you're understanding, why you're obtaining this ilm. Perhaps that is why he used to say, Hazrat Ali, "Law kashifa li al-ghida'a, mazdaddu yaqinan wala iman." I think for me, this is one of the greatest quotes of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. He says, "Remove for me the veil between Allah and I. Remove from within me so I could see Allah with my eyes. My yaqeen in Allah would not increase even by a little bit." With that yaqeen being the foundation of the door of knowledge. Once we have this sort of intangible ilm, then we can go out and seek whatever tangible ilm you want. People used to have this intangible ilm, don't get me wrong. And when we did, up to about 800-900 years ago, guess where the greatest universities in the world were? In Islam. Guess who the greatest scientists were? Islamic. Guess who the best mathematicians were? Islamic. The base of anatomy is built by Muslims. The base of astronomy, Muslims. The base of mathematics, Muslims. The base of psychology is built by none other than Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. A very interesting quote by Hazrat Ali on psychology here. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was noted to have said that when you hide something, and if you hide something, you either express it through a slip of the tongue or by a slip of the face. In today's day and age, that's called a Freudian slip.
So the current psychologist who most of the books, the Freudian psychological theories are based on him, and he says called the Freudian slip. No Muslim science, unfortunately, psychologist was able to mention this is actually a theory of Hazrat Ali radiallahu ta'ala. I wish that there would be someone who would gather up, perhaps, my peers, my elders, my youngsters, someone of the next generation that gathers these quotes of Hazrat Ali, incorporates them with the current science to try and understand where the wisdom of Hazrat Ali 1400 years ago was. Because in my opinion, the wisdom of Hazrat Ali 1400 years ago is more relatable today than it was 1400 years ago, because unfortunately, the listeners of that time simply, yes, they heard, yes, they understood, but again, as Dr. Saab said, they weren't fully comprehensive or understanding of what the hikmah, the wisdom, the knowledge of where he was trying to take the people. Today we have a little, I'm not saying we have a lot, but we have a little bit more basis of science that we can now incorporate the intangibles and the tangibles from Hazrat Ali, incorporate them, weave them, sew them with the ilm that we currently have, and you will have the greatest scientists in the world, with the base being the gate of knowledge, Hazrat Ali radiallahu ta'ala. और इन्हीं चीज़ों को शायद एक्सप्लॉइट किया हमारे जो साइंसदान, जिनका अभी हम आज अपनी ट्रांसमिशन में जिक्र भी करेंगे, थोड़े से नाम जो हमारे साइंसदानों के, जो इन्वेंटर्स के जो बताएंगे, उसके बारे में हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। अभी जिस तरह से शेख साहब ने भी जिक्र किया कि किस किस चीज़ के इन्वेंटर्स मुस्लिम दुनिया से उनका ताल्लुक था, मुसलमान थे, इस्लामी दुनिया से उनका ताल्लुक था, अलजबरा की, मैथमेटिक्स की, अलजबरा की एल्गोरिथम्स, जिस पे ये सारा आजकल जो सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें बेस करती हैं, एल्गोरिथम्स जिनको हम आज जिनके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, वो किसने बनाया? अल-ख्वारिज़मी, algebra ka inventor. So, and to that, Sauda, I'll mention that, both of our speakers have highlighted the universality of Imam Ali, not as a Muslim figure, but as a universal figure for all of humanity. Exactly. And with that, I would like to share with everyone a video from a South African-born Roman Catholic priest, Father Christopher Closey, who's made a short video, professor of Shia Islamic Studies, lecturer in Quran Islamic ethics. So let's watch this video. We are living, you and I, in a period in which there are great advances being made in research, in the sciences, in the fields of medicine, both in terms of practice and in terms of the advance of treatments. But at the same time, we are living in a period of an unprecedented medical crisis, probably the worst for many of us in our lifetime. Ethics surrounding medical research and medical practice have become more urgent, more imperative. For all ethics, whether these are medical or political ethics, whether these are social, religious ethics, every attempt to cultivate virtue in people through education, through practice, and particularly for those who are living out the Islamic faith in all of its facets, there could be no better guide to and model of integrity and ethical practice than Ali bin Abi Talib. In fact, for me, Ali, as an exemplar of integrity and of ethical standards that are demanded of us, he transcends the boundaries and borders of sectarianism and of religion, and could well be proposed as a universal model. There is even more reason for us, you and I, to look to the one in whom Islamic faith and lifestyle are encapsulated, Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib. Islam gives detailed and prudent guidance on ethical and moral issues relating to medical and scientific fields, especially those dealing with human life. This is to be expected, since in Islam, as is evident in many verses of the Quran, human life is regarded as an invaluable and inviolable gift from God. So, I happily and unhesitatingly
offer to all of those whose lives are caught up in the crucial and challenging world of medical practice, medical research, medical ethics, the person of Ali as a light to guide you when all the other lights in which we have trusted begin to go out. Every blessing to you. An amazing video from Father Closi, and I welcome everyone back, our guests, Dr. Abdi and Sheikh Abdullah. Please take it away. थैंक यू शिफा, बहुत ज़बरदस्त। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर तकी आबदी, आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से शेख साहब ने भी जिक्र किया, अभी हमने एक इनपुट चलाया फादर का, रेवरेंड का, दुनिया की तमाम ही जो इल्मी शख्सियात हैं वो शायद इससे इस बात की नफ़ी ना करें कि इल्म का दरवाज़ा, बाबुल इल्म, हज़रत अली करमल्लाह वजहो, क्या शख्सियत थे, क्या नॉलेज थी उनके पास, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका उठना बैठना जाहिर है। जब मदीनतुल इल्म के साथ बाबुल इल्म बैठेंगे तो फिर एक दुनिया भर की शख्सियात, डॉक्टर साहब ये बताइएगा उनके बारे में क्या, किस तरह से, ख़ासतौर पर शायरों ने किस तरह से इनको खिराज अक़ीदत या खिराज तहसीन पेश किया है। जी, शायरों का तो मैं जरूर अर्ज करूंगा, लेकिन अभी जो फादर ने 3 पॉइंट बताए हैं उसको मैं जरा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के जो आप खुतबात देखेंगे और जो खुतूत देखेंगे, तो एक तो जो उन्होंने आपके जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड आपके उसके द ह्यूमन राइट्स, अगर हम यानी मालिक अश्तर का वो लेटर आपके पढ़ें जो उन्होंने आपके लिखा था कि हाउ ए रूलर शुड बी देयर, मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑफ टुडे इन 21st सेंचुरी विल फॉलो दैट लेटर। तो मालूम ये होगा कि हमारे 57 इस्लामिक कंट्रीज, इफ दे फॉलो हजरत अलीज लेटर टू मालिक अश्तर, दैट मालिक तू यहाँ का हुक्मरान नहीं है बल्कि तू यहाँ पर खिदमत गुजार है, हर शख्स का जो हक है अगर पामाल होगा तो वो तेरी गर्दन पर रहेगा। द वे हजरत अली ने जो उस गजब के लेटर में बयान किया है, द फादर हैज जस्ट शोन दैट अबाउट द इंडिपेंडेंस, आपके हुर्रियत और आज़ादी और मुकाम इंसान और फजीलत इंसान और आपके हुकूक ज़न, तो वो एक पॉइंट है। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई, द मेडिकल साइंस, देखिए हजरत अली फरमाते हैं ये नाक में पानी लेने के जो है वजू करते वक्त एट द टाइम ऑफ वजू वी टुक सम वाटर इन नोज, तो द मौला अली डिस्कस के व्हाट आर द बेनिफिट, यू सी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ जस्ट टेकिंग वाटर, और आफ्टर 14 centuries we just realized that this in this pandemic the only thing which has helped, you see, was the steam inhalation. I mean, for just killing the virus, cleaning the nose and the throat. So what Maula Ali was telling, जरसुमे का उस वक्त इल्म नहीं था हमको, हम वायरस नहीं जानते थे, हम बैक्टीरिया नहीं जानते थे, लेकिन अली ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके मानी ये थी कि अगर तुम नाक को साफ करते रहोगे तो बहुत सी बीमारियों से तुमको नजात मिलेगी और बहुत सी बीमारियों का तुमको जो है दरमान मिलेगा, यानी दैट विल बी ट्रीटेड। तो वो 1400 साल पहले का, आज के पेंडेमिक ने ये बताया कि इफ यू टेक आपके ह्यूमन, चूंकि वी आर वर्किंग आपके जो है those people who have taken आपके steam inhalation, they were affected less than what those people have not practiced that thing. तो कहने का मतलब ये है कि ये साइंस को देखिए, तो हजरत अली खुद शायर थे। मौला अली के जो है इस वक्त आपके जो है 200-250 से ऊपर खुतबात हैं। मौला अली के हमारे पास लॉट ऑफ लेटर्स है। मौला अली का मेरे पास आपके कम से कम 2 दीवान है और तर्जुमा भी है। मौला अली का एक जबरदस्त शेर ये है कि उसका तर्जुमा मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायरों का जो जिक्र हुआ है तो उसमें जो है मौला अली फरमाते हैं कि शेर अरबी है, उसका तर्जुमा ये है, क्या तुझको ये ख्याल है कि तू एक जर्म सगीर है हालांकि तुझ में एक बड़ा आलम समाया हुआ है। अली का शेर, यानी ये शेर, इसी को इकबाल ने कहा, आंच दर आलम न गुंजत आदमस, आंच दर आदम बगुंजत आलमस,
یعنی یہ 6 فٹ کے انسان اتنا بڑا ہے کہ اس میں پوری کائنات کو آپ سمجھ سکتے ہو, اور یہ 6 فٹ کا انسان اتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات میں سما نہیں جاتا. یہی مولا علی نے کہا اپنے شعر میں. مولا علی نے اسی چیز کو کہا کہ کیا تجھ کو یہ خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا آپ کے جو ہے ایٹم ہے؟ نہیں, تجھ میں ایک بڑا عالم سمایا ہوا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے پیٹ کو تم جانوروں کا قبرستان مت بناؤ, یعنی جسٹ ڈونٹ ایٹ سو مچ میٹ, ڈونٹ ٹیک سو مچ چکنز, بیکاز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کے جو جملے ہیں, یا مولا علی فرماتے ہیں نیند کے بارے میں فرماتے ہیں, مولا علی جو ہے ایکسرسائز کے بارے میں فرماتے ہیں. دیکھیے جب ایک وہ آیا ہے آپ کے کیا کہتے ہیں انڈین حکیم آیا ہے مامون رشید کے دربار میں, تو امام رضا, کیونکہ امام رضا بھی جو ہے حضرت علی سے لے رہے ہیں, امام رضا اس سے سوالات کرتے ہیں کہ تو جانتا ہے آنکھ کی شکل جو ہے کیوں بادام کی طرح سے, تو جانتا ہے آنکھ کیوں 2 ناک کے درمیان رکھی گئی ہے, تو جانتا ہے کہ ناک کے سوراخ کیوں نیچے ہے, یہ سب تو جانتا ہے کہ پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم کیوں ہے. پھر وہ بتاتے ہیں یہ علم لدنی ہے, یہ سب قرآن میں ہے, ہم لوگ اس سے واقف ہیں. اس کے بعد ہر ایک چیز کی گفتگو کرتے ہیں اور کر کے بتاتے ہیں, اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شہد اور ایک دودھ لاکھوں جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے, یعنی تم بنا نہیں سکتے آرٹیفیشل, دیکھیے آرٹیفیشلی بنا نہیں سکتے شہد کو بھی, اور اس میں شفائیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی خود شاعر تھے, اور حضرت علی نے آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ پنجتن میں پیغمبر اکرم نے تو شعر نہیں کہے, لیکن پہلے جو ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ جس نے میں سب سے پہلے جو نعتیہ شعر کہا وہ مولا علی تھے. پورے آپ کے نعت کے مفسرین جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے نعتیہ شعر کہا. امام حسین کے ہمارے پاس شعر ملتے ہیں, ہمارے پاس شہزادی فاطمہ کے سبت اللہ آپ کے جو ہے شعر ملتے ہیں جو نعتیہ شعر ہیں ہمارے پاس آپ کے جو ہے. تو کیونکہ یہ علم رجال, یہ علم آپ کے دیکھیے صرف علم کلام جو علم آپ کے الہی ہے اس سے یہ واقف نہیں تھے, بلکہ حضرت علی کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں علم فقہ تھا, حضرت علی کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم جفر, علم نجوم, علم حیت, علم اور بلاغت. یہ نہج البلاغہ دیکھ لیجئے آپ کے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ذکر چل رہا ہے کوفے کی آپ کی مسجد میں کہ سب سے زیادہ لفظ کون سا بات میں استعمال ہوتا ہے, تو ایک شخص نے کہا کہ الف, تو مولا علی کھڑے ہوتے ہیں اور پورا خطبہ دیتے ہیں جس میں الف کا ذکر نہیں ہوتا. اس خطبے کو کہتے ہیں آپ کے جو ہے یعنی گفتگو فرما رہے ہیں جس میں الف کا ذکر نہیں ہے. تو وہ بلاغت, وہ آپ کے فصاحت, وہ تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی فارسی شاعر نے کہا کہ کثیرہ میسر نشد اس سعادت, کسی شخص کو بھی یہ سعادت نہیں ملی بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. مولا علی کی ذات میں کہ کعبے میں پیدا ہوئے اور آپ کے جو ہے مسجد میں شہادت پائی. تو اور یہ جتنے بھی سلسلے ہیں ہمارے آپ کے اولیاؤں کے ایک کے سوا باقی سب حضرت علی پر ہی جا کے آپ کے جو ہے دہلیز علی پر آپ کے جو ہے تمام ہوتے ہیں. یہ اولیاؤں کے, یہ عرفا کے, یہ اور شاعری ان لوگوں کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دل کی یعنی یوں سمجھے کہ بھڑاس نکالنے کے لیے تھا. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے جو خوبصورت ترین شعر کہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے پاس کمی وہی ہے. میں 4 مصرے صرف پڑھ کے آپ کو آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے پوچھا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. زبردست. تو اس وجہ سے باقی نہیں ہے کہ تو نے پیغمبر اکرم کا دروازہ چھوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. تو نے اہل بیت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا. تو نے علی کی یہ تمام فرمانوں کو, علی کے اس نہج البلاغہ کو, علی کے اس خطوط کو, علی کے تحبرات کو, علی کی اس سائنس کو, علی کی اس دانش کو تو نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے کی محمد, کیونکہ علم پیغمبر آیا ہے مدینۃ العلم, یہ باب علم کے پاس ہے, اور باب علم کے پاس سے اور اسی اولاد میں آیا ہے. تو یہی چیز کی کمی ہے. اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کوشش ہے امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کی, ایم آئی ٹی وی, مائی ٹی وی جس کو ہم کہتے ہیں میڈکس انٹرنیشنل ٹی وی, اس کی کوشش ہی ہے. اور آج کی لانچ ٹرانسمیشن میں ہم نے سب سے پہلے ذکر
हजरत अली और साइंस का ये टॉपिक इसीलिए रखा है, और आप दोनों मेहमान इसलिए हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं कि हम कोशिश तो शुरू करें कि उस दरवाजे को जो हमने छोड़ दिया उसको दोबारा से पकड़ें किसी तरह से। इतने सारे अलक़ाबात, मौलूद काबा, शेर खुदा, बाबुल इल्म, शेख साहब, क्या हजरत अली करमल्ला वजह के इतने सारे पहलू, ये भी कहा गया कि दुनिया से चांद का जो फासला है वो भी शायद हजरत अली करमल्ला वजह ने बता दिया था। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको शायद हम आज तक उजागर नहीं कर पाए या उनकी तलाश नहीं कर पाए, शेख साहब? MashaAllah. Before I answer that, I just want to hit on a couple points here. First of all, the letter by Hazrat Ali to Malik bin Ashdar. Dr. Saab, mashallah, he mentioned that United Nations, Kofi Annan, who was the Secretary General of United Nations from 1999 to about 2004, he actually called it the greatest single letter of government ever written in the history of humanity. And I always, whenever that letter comes about, I always share the final two things that Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu wrote to Malik bin Ashtar. And I want to share with you guys, and I always want, especially my youth, to understand that this is the values. These were the values that Hazrat Ali wanted to enlist in all of the upcoming generations of Muslims to come. The first thing that he said, number one, either you are your brothers in faith or you're equals in humanity. There are no other types of humans. You're either your brothers in faith or you're equals in humanity. This single statement eliminates any sort of racism, sexism, discrimination, wars based on religion, wars based on territory, wars based on race, wars based on financial crises. This eliminates all of that. And the origin of that is the gate of knowledge. Exactly. And he was perfect, the best ambassador of Islam. Alhamdulillah. And that's our leader. And that's the kind of leader that we need. There is a severe lack in our youth of role models, of actual role models. Right now, there was a time, my parents, I'm sure, and I'm sure your parents, I think some of you are a little older than myself, when you guys grew up with the love of Hazrat Ali, with the Ahlul Bayt. You grew up with the love of Rasulullah. Right now, our parents, what they do, put on Arthur, put on Good Morning America, put on this show and that show. Why are we not telling them about these stories of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu? How about math? You see a child who is particularly talented towards math. Hazrat Ali radiallahu ta'ala, you mentioned algebra. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu had a algorithmic brain. And how do I know that that's a fact? He actually created the first algorithm, in my opinion. And that algorithm was based on the virasat that exists within Islam. There are multiple stories. I'll share one. There's a woman that comes up. Hazrat Ali is about to ride on his horse. She comes up and she actually holds onto the kurta of Hazrat Ali and does not allow him to fully mount the horse or the camel. And she says, there is a great injustice that's been done to me. My husband, who has this much wealth, I only obtained 1 dirham. Hazrat Ali radiallahu ta'ala, we said, well, did your husband have 12 brothers? Did he have this many brothers? Did he have the sons? Did he have this many daughters? Does he have this many wives? She said, yes. He said, Hazrat Ali, then you only deserve 1 dirham in your virasat. Within seconds, Hazrat Ali radiallahu ta'ala who deduced, if that isn't an algorithm in the brain, I don't know what is. Yeah, exactly. Algorithmic nature of Hazrat Ali. Dr. Saab, he mentioned that Hazrat Ali said in the 6 feet of humans, the entire universe exists within him. The universe, when the Big Bang happened, existed of carbon, nitrogen, oxygen, and some of the other atoms. The human body, when you break it down, it consists of carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen. So very much so, we are the essence of the universe within us. And the universe exists within us. Another thing that I'd like to mention here, Imam Ali, and this is one of the greatest scientific fact that to this day nobody can refute, because it's actually written in the books of biology and it's written in the books of evolution. Imam Ali radiallahu ta'ala was asked by a contingent of Persians. They come to him and their motive was very wrong. It was a very ill-motivated question. They wanted to ask Imam Ali
a question that would take him so long to answer that he would actually extend his Salatul Maghrib, that he would not be able to read Salatul Maghrib on time. These individuals, they come, they sit down, they say, and it's a very simple question. They say, which animals lay eggs and which animals give live births? This is recorded, by the way, that this is the sentence, the answer of Hazrat Ali. And no modern biologist or zoologist can ever refute this claim. And they were expecting Hazrat Ali to go on and he would list all of the animals and etc., etc., etc. Hazrat Ali wrapped it up within one sentence. He says, those animals with ears on the inside lay eggs and those with ears on the outside give birth. Problem solved. Professor Gibbons, who's a biologist by nature in about late 1900s, he went out and tried to counter the claim of Hazrat Ali. In his final book that he wrote, he said, to this day, I have to give it up. I have not been able to find a single species of animals that violate the law of Ali. He actually called it the law of Ali. Inshallah. I'll end on a couple more scientific facts. I know Dr. Saab, he mentioned Nahjul Balagha, and he mentioned one specific point. Hazrat Ali radiallahu ta'ala is actually an originator of Arabic grammar. He actually created the Arabic grammar as we know it. In fact, the Arab that exists on the Quran today, the originator of that is Hazrat Ali. The ba, the dot on the ba, the ta, the tha, the jim, the kha, all of that, the dots, they were placed by Hazrat Ali radiallahu ta'ala. So an individual, he stands up, he says, I see ba, ta, tha, jim, kha, dal, za, sheen, all of these letters with dots. I think it is now impossible for anyone to write a khutbah without a dot. As Ali says, why wait? Why write? He stands up and he iterates a khutbah so eloquent, and not a single letter with a dot is used in that entire sentence. And the final, mashallah, just to answer your question about how we can relate science today and what we can earn. I always bring this up, and I know we're running short on time, so I'll end it here. But that's okay. Hadith al-Haqiqa, the Hadith of reality. Malik bin Ashtar says to Hazrat Ali, he's riding behind him on his camel. He says, "What's the truth? What's the truth?" Hazrat Ali, Mawla Khuda, he turns back to Malik. He says, "What do you want to know about the truth? Why do you want to know about the truth?" Malik bin Ashtar, he says, "Am I not your companion in seeking ilm? Am I not your friend in seeking ilm?" And look at this sentence by Imam Ali. He says, "What sprinkles in you overflows in me." Allahu Akbar. What sprinkles in you overflows in me. Allah. Malik bin Ashtar, he motivates Hazrat Ali. He knows that the door has been opened. He says, "Tell me more." I don't have it memorized, so I'll share it with you here. Tell me more. The disclosure of the majesties of glorification without indication. If you ask me to do tashri, to do tafsir, Malik bin Ashtar says, "Tell me more." Hazrat Ali says, the negation of speculation through the realization of reality. Malik bin Ashtar says, "Tell me more." The negation of realities through the rendering of the veil of the secrecies. Malik bin Ashtar says, "Tell me more." Appreciating the divine oneness through apprehension of the attributes of the divine unicity. Malik bin Ashtar says, "Tell me more." A light that illuminated from the pre-eternal dawn rests now on the talismanic tables of divine unicity. Malik bin Ashtar says, "Tell me more." As the Ali says, "No, turn off the lamp. It is now time for Fajr." 5 sentences that took me maybe 5 minutes to say to you, took Imam Ali the time wrapped, it shrink from Maghrib to Fajr, to Fajr, and he completely wrapped up the haqiqah of this life. And another phrase that I'll today, Hazrat Ali is known to have said, and this is a phrase that everyone should kind of write on their wall, write on their phones, and live life based on this phrase. He says, "Do for this life as if you live forever, and do for the afterlife as if you die tomorrow." Zabardast. And inshallah, if we ever live by that quote, Islam will be fine, our youth will be fine, our future will be fine, inshallah. बहुत ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर साहब. इसी पे आपसे भी जानना चाहेंगे हज़रत अली करमल्लाह वजहो की शख्सियत के वो पहलू
علامہ اقبال کا شعر جیسے ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا دنیا میں تجھ سے کام، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہمارے پاس امام موجود ہیں امام علی کے بارے میں، اگر ہم انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو شاید ہم پھر سے وہ مقام حاصل کر پائیں جو مسلم دنیا میں مسلم سائنسدانوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، آج ساری دنیا ان سے فائدے اٹھا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ نے. جو ابھی ایک اشارہ کیا تھا کہ 1400 سال پہلے the Ali has measured the distance between earth and sun. جی، یعنی سورج اور زمین کا فاصلہ مولا علی نے جو 1400 سال پہلے بتایا ہے، اس زمانے میں، کیونکہ عربی میں 1000 سے زیادہ تو آپ کے جو ہے عدد ہی نہیں، تو اس کو تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو ایک عربی گھوڑے پر بیٹھ کر جس کی رفتار 22 میل پر گھنٹہ ہوتی ہے، سورج کی طرف جائے گا تو 500 سال میں تو سورج پر پہنچ جائے گا. یہ مولا علی کا آج کیلکولیٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ مولا علی نے جو یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ایک عربی گھوڑے پر مسلسل جائے آپ کے 500 سال تک تو سورج پر پہنچ جائے گا. ایگزیکٹلی دیٹ از دا سیم ڈسٹینس ناؤ وی ہیو ارتھ ٹو دس ون. تو یہ جو ہے وہی شخص کہہ سکتا ہے جو پوری چیزوں سے واقف ہو. اگر آپ حضرت علی کا یعنی 28واں خطبہ دیکھیں، 28 خطبہ علی 28، what he is talking about the world, what he is talking about the interesting thing of the world, that how world will snatch you from your character, from your everything, what you are the تو وہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے حضرت علی کی جو ملیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے پاس ایک عجیب چیز ہے. حضرت علی یہ کہتے ہیں، ایک عجیب جملہ حضرت مولا نے کہا، یہ لیتے جائیے اس کی. مولا فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو تیرا دشمن نہیں تیرا دوست ہے. کیا جملہ ہے! If we find out، ہم کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. He is، حضرت علی فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو تیرا دشمن نہیں ہے تیرا دوست ہے. Can you bring the friendship like this? This is how you purified yourself. یا ایسا کہتے ہیں کہ تم اگر اپنا مقابلہ اپنے نیچے لوگوں سے کرو گے تو تم امن میں رہو گے. کیونکہ آپ کہیں گے میرے پاس سائیکل تو ہے، کم از کم میں سائیکل چلا سکتا ہوں. اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. لیکن اس شخص کو دیکھیں گے جس کے پاس آپ کے امپالا کار ہے تو کہیں گے اللہ میاں آپ نے اس کو سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ نہیں دیا. تو وہاں پر آپ کے تو مولا علی کے یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتے ہیں نا. اور اس کے بعد سے مولا علی فرماتے ہیں آپ کے کہ کسی شخص کی رائے اس کی فہم کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز وہ کہتے ہیں کہ اپنی جس کی جتنی آپ کے جو ہے فکر ہوگی وہ اسی طریقے سے رائے دے سکے گا. اسی لیے مولا علی نے کہا کہ تم پڑھے لکھے لوگوں کی اور علماء کی صحبت میں بیٹھو. تو حضرت علی کے جو اخلاص کے نمونے ہیں، جیسا ابھی شیخ صاحب نے بتایا بعض چیزیں کہ وہ جو جملے ہیں تقریباً آپ کے جو ہے 350 علی کے کلمات ہیں. یعنی جو علی کو لوگوں نے، ہمارے علماء نے، دیکھیے اصل میں ہوا یہ ہے وی لاسٹ لاٹ آف خطبات آف علی. یعنی ہمارے پاس جو 250 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس لیٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس آپ کے جو ہے مولا علی کے یہ جو ہے گولڈن آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ سینٹنس بھی ہیں جس کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن وی لاسٹ اے لاٹ آلسو. مگر ابھی جو جتنا بچا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آخری الفاظ حضرت علی کی کیفیت یہ ہے کہ جیسا آپ کے جو ہے دنیا کے بڑے بڑے آپ کے مفسروں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی کہ شخصیت ہے جس کا ہر زاویہ آپ کے چمکتا ہے. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ سیرت نبوی کا کمپلیٹ نمونہ، زبردست، قرآن مجید کا آپ کے جو ہے کمپلیٹ نمونہ. یعنی ایسا آپ کے دیکھیے معبود اور اب میں فرق یہی ہے، وہ پیغمبر اکرم ہو یا علی ہو دونوں سجدہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے علم مطلق کے حقدار نہیں ہے. علم مطلق صرف اللہ کا ہے، لیکن علم لدنی کے اختیار ہیں. تو اگر آپ کے ہم کو چاہیے کہ دنیا بھی ہماری ہو
आखिरत भी हमारी हो, हम पीरूज रहें और कुरान पर अमल करें और सुन्नत पैगंबरी को आपके जो है फॉलो करें, तो इस दर के सिवा और कोई दरवाजा नहीं है। इसी बहुत दरवाजे पर आपके बेशक आके हमको बेशक आपके जो है क्या कहते हैं अपनी पेशानी को रगड़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही, पेशानी चमकेगी और इस बिल्कुल चमक से जो आपके तजल्ली निकलेगी वो हमको रास्ते बताएगी। इसी बिल्कुल वजह से आपके जो है क्या कहते हैं बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जो अशार कहे हैं, मैं क्योंकि खुद शेर से बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ, उस बस दरिया में जाते नहीं जाते बह रहा एक हूँ एक शेर, क्योंकि इस जाते जाते एक वक्त शेर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा जी। हूँ कि देखिए सबको तो लोगों ने आपके रजीउल्लाह ताला और अलैहिस्सलाम कहा, लेकिन मौला अली को सिर्फ कहा करमुल्लाह वजहु, यानी क्या बात, करामत है उसकी आपके चेहरे पर, उसको बहुत देखना इबादत है, उसको सुनना इबादत है, उसके अमल पर चलना इबादत है। इस वजह से कि वो पूरा आपके जो है माबूद की इबादत में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल नमाज की हालत में जब तीर निकाला जाता है पैर से तो अली को महसूस नहीं होता। तो काश के इस तरीके से आपके जो है, और अली ने ऐसे फर्जंद दिए जो हुसैन के, हम सब तो काबे की तरफ सजदा करते हैं, लेकिन जोश ने एक शेर कह दिया कि क्या नमाज शाह थी अरकान ईमानी के साथ, काबा मस होता था हर सजदे में पेशानी के साथ। तो बहुत काबे की जबरदस्त, तरफ बहुत सजदा जबरदस्त, करना सही बात, और है, और सही बात है, काबा सही आकर बात, पेशानी से मस होना और है। बहुत जबरदस्त, वो आपके जो है वो बिल्कुल सजदा जिससे अल्लामा इकबाल ने कहा कि उसी को आज तड़पते हैं मिंबरो मेहरा, वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती है। सही बात है, बहुत सजदा जबरदस्त ऐसा किया डॉक्टर जाए कि साहब, जमीन की रूह कांप जाए, वो बहुत सजदा जबरदस्त, रूह जमीन जिससे कांप बहुत जबरदस्त जाती डॉक्टर है। साहब, मैं आपका अल्लामा इकबाल कहते हैं उसी को आज तड़पते हैं आपके मस्जिदों मेहराब, वो एक जनाब सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार हजार सजदों से सजदों से देता है देता है निजात। बहुत आदमी को शुक्रिया, निजात। बहुत तो शुक्रिया अदा करना यही चाहूंगा आपके मेरा डॉक्टर तकी आखिरी हाफिज साहब, शुक्रिया। आपका भी, शेख जाफर साहब आपका भी, आप दोनों हजरात ने जो आज हमने ये सोहबत जो लगाई, जो ये बैठक लगाई आप दोनों के साथ, हज़रत अली के बारे में, हज़रत अली करमल्लाह वजह के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी शुजात के बारे में, उनकी बलागत के बारे में, उनकी नॉलेज बेस के बारे में हमने जानने की थोड़ी बहुत अपनी सी कोशिश की, और आगे भी ये कोशिश हम IMI के और माई टीवी MI TV के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते रहेंगे ये कोशिश, और आप लोगों को फिर से हम ज़रूर कभी ना कभी दोबारा से दावत देंगे। और इस वादे के साथ आज आप दोनों को जाने की इजाज़त हम दे रहे हैं कि आइंदा भी आप हमारे साथ जुड़े एक रहेंगे। जुमला कहना चाहता हूं क्योंकि जी मैं आपके जो जी डॉक्टर साहब, 42 years आई एम ए फिजिशियन एंड स्टिल वर्किंग आपके टोटली। इमामिया मेडिक्स के मानी ये है कि मेडिक्स का ये इमाम है। अरे जबरदस्त, क्या बात तो करी, इस वजह से क्या बात करी, आपके जो है हम सब के इमाम है, और मैं चाहता हूं कि इमामिया मेडिक इसी तरीके से पूरी मेडिकल आपके हिस्ट्री आपके इंडस्ट्री के इमाम इंशाल्लाह बने, इंशाल्लाह और वो इंशाल्लाह चीज जो इमाम करता है हिदायत देता है, हमको हिदायत देते इंशाल्लाह। रहें। मैं Subhanallah. आपसे Thank you थैंक यू so वेरी मच, much. बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेख साहब, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर अस्सलाम टाइम। वालेकुम। अस्सलाम Thank you. Walaikum salam. I just want to thank our guests for this wonderful this wonderful segment that begins the massive project that IMI is undertaking, Medics International Television, that all of you are tuned into, and we're getting feedback all across the bottom of our screen. Wonderful messages from our family, our IMI family across the world, and if I can now bring us towards some special messages, pre-recorded messages that poured in ahead of our inaugural transmission. मेडिक्स इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल का आगाज़ बहुत ही खुशी का मौका है। मुबारकबाद का मुस्तहक़ हैं इमामिया मेडिक्स के वजी और उनके रफ़क़ाए कार। इन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर फलाही कामों का जो सिलसिला शुरू किया था उसका एतराफ़ सारी दुनिया में किया जाता है। उनके कायम किए हुए स्कूल, उनके कायम किए हुए कॉलेजेस, उनके कायम किए हुए मेडिकल के इदारे, डिस्पेंसरीज़ और दूसरे फलाही काम दिन ब दिन उनके इदारे की तौक़ीर में इजाफ़ा कर रहे हैं। MIT चैनल जो है ये एक नया निशान और एक नए इम्तियाज़ की बात है। तमाम रफ़क़ाए कार मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और
مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس چینل کو بھی ان کے دوسرے پروگراموں کی طرح بین الاقوامی شہرت نصیب ہوگی اور اس کو اعتبار حاصل ہوگا، اور یہ قوم کی خدمت کرنے میں اور فلاحی کاموں کی ترویج و فروغ کے سلسلے میں بہت اہم خدمات سر انجام دے سکے گا۔ نقلق ونحلم ثم نبتكر ونخترع لمعالجة المشكلة التي سببت لنا ذلك القلق ابتداء، ومن خلال عملنا الدؤوب قد نأتي بحلول يراها البعض منا ضربا من الجنون، سيما عندما نعلن عن ثورة في آلية إيصال خدماتنا لمن يبتغي الاستشارة في الطبية في وقت تعيش فيه معظم الأطراف إن لم نقل جميعها بظروف قاسية على درجات متفاوتة من الشدة. يشهد التاريخ أن العالم الإسلامي مر بعصر ذهبي من تصدر نشر البحث العلمي ومنه البحث الطبي ما بين القرنين الميلاديين 7 و12، ونحن في جمعية إمامية ميديكس انترناشونال نستلهم من الذين تصدروا منصات العلوم ما يعيننا على الاستمرار في ما يحتمه الواجب الإنساني والسلوك المهني منذ تأسيس جمعيتنا قبل ما يزيد عن ربع قرن. داعين الله تعالى أن يتقبل منا هذا القليل. I want to take this opportunity to congratulate IMI Channel, and this will be an avenue to bring amazing programs in the future. And congratulations again, Mubarak. جی شفا، کیسی آپ نے گفتگو آپ تو سن رہی تھیں، آپ نے تو کچھ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، لیکن شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو تھی، جس شخصیت کے بارے میں تھی، وہ تو شخصیت ہی ایسی ہے کہ جتنا ان سے فائدہ اٹھانا ہم چاہیں میرے خیال سے ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا. یہ الگورتھمز اور الجبرا کے اوپر ہی بیس کرتے ہوئے آج شاید ہم دنیا کے اور چاند کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگانے میں کامیاب ہو پائے ہیں. کیوں شفا؟ And this is a wonderful opportunity that IMI is hosting a platform where we can speak about science and technology, education, math, in the same vein as we talk about religious figures, people that we, as Sheikh rightly said, should really use as role models for the work that we do. And that's why we think and everyone in the comments is also agreeing that something like My TV was very necessary for our community and is very well received. We're having hundreds of messages pouring in, and we thank everyone for joining us today. اور مائی ٹی وی کا ہمارا، ہم اپنے ویورز کو بتاتے بھی چلیں کہ جو ہمارا موٹو ہے ایم آئی ٹی وی کا، میڈکس انٹرنیشنل ٹی وی کا، جو اس کے پیچھے جو آرگنائزیشن ہے، جو این جی او ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن امامیہ میڈکس انٹرنیشنل، ہمارا موٹو یہی ہے کہ سائنس، طب یعنی میڈیکل فیلڈ میں، اور جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی، اور خاص طور پر جو مسلم دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہمارا مقصد ہے کہ جہاں سے ہم اپنا ماضی دوبارہ سے تلاش کر پائیں، اپنے ماضی کو دوبارہ سے ہم کھوج پائیں، اپنے ماضی کو دوبارہ سے ہم پکڑ پائیں، اور وہ کامیابیاں جو ہمارے ماضی نے دیکھی ہیں، ہمارے مسلم سائنسدانوں نے دیکھی ہیں، ہماری مسلم امہ نے دیکھی ہیں، وہ جو ہم سے کھو گیا ہے وہ راستہ، شاید ہم اس راستے پہ دوبارہ سے واپس آ سکیں. It's just اس لیے یہ ہماری کوشش ہے، یہ ایم آئی ٹی. In learning about our past, we can
work towards the future. And it's this massive community that will come together, inshallah, in this platform and share with us their knowledge, the scientific advancements and achievements of our community. So we do have a video about Medics International TV and what's in store. Let's watch. We, the humans, are restless. We are dreamers, inventors, adventurers, innovators, healers. We adapt to the harshest of climates. And when tested to the limits, we come up with crazy solutions. We are designed to shatter myths. We are known to love the challenges. And that's where the revolution starts. And that's how we find the answers of our questions. The era between 7th till 12th century is considered to be the golden age of Islamic science. The foundation of modern science and research was laid down with the greats like Abu al-Qasim al-Zahrawi, father of modern surgery and the father of operative surgery. Ibn al-Nafis, father of circulatory physiology and anatomy. Abbas ibn Farnaz, father of medieval aviation. Jabir ibn Hayyan, father of chemistry. Ibn Khaldun, father of sociology, historiography and modern economics. Ibn Sina, father of early modern medicine. Al-Khwarizmi, most renowned as the father of algebra. But somewhere down the lane, we lost that drive for discovery and the wonders of research were lost to the dust of time. Imam Medics International, one of the world's leading healthcare, education, relief and disaster management non-profit organization, has been striving hard to reconnect to the roots. Founded over 25 years ago, IMI's membership comprises of doctors, scientists, healthcare professionals, as well as philanthropists from around the world working to serve humanity in all corners of the world. Stepping up in modern times, IMI is launching its very own multilingual digital channel. MITV, a long-standing vision to create a unique platform to fill the void of holistic, scientific and social channel that serves the need of Muslim world. Aiming to give you the best, MITV will produce diversified programming on medical advancement, scientific research, culture, current affairs, sports, women issue, lifestyle, history, as well as special shows for our youth. MITV will be a family TV which has something for everyone. With programs in several languages such as English, Urdu, French, German, Arabic and Persian, MITV is a platform for diverse voices of the Muslim to come together and share their scientific achievement. So tune into our arena to grow, improve and become the greatest in your field.
वेलकम बैक शिफा. अब हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन में? हमारी ये 3 घंटे की ट्रांसमिशन है आज की, लॉन्च ट्रांसमिशन माई टीवी की, MI टीवी की, मेडिक्स इंटरनेशनल टीवी की. इसमें और क्या क्या है हमारे पास? कुछ खास आने वाला है लगता है. You know, the next guest is someone that's very well known to the IMI core and also to the larger population. He joined IMI's team, coming from a background in media and entertainment from some of the largest platforms in the entire globe. We're very, very excited to invite the IMI's media coordinator, the man behind the scenes of this very show here today, Ashar Zaidi. वेलकम अशर जैदी साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. हाउ इज एवरीवन एंड ईद गदीर मुबारक टू एवरीवन फ्रॉम मी. सबको ईद गदीर मुबारक हो, सबको ईद गदीर मुबारक हो. अशर ये बताइएगा, ये 25 साल से जायद पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, आप भी अच्छे खासे अरसे से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजी रहे हैं और इस चैनल की लॉन्च में भी आपका बड़ा अमल दखल रहा है. इससे पहले कि हम आपके फेवरेट सब्जेक्ट यानी स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, जिसको आपने इस चैनल में ज़रूर शामिल रखना है, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स एंड एवरी अदर थिंग, एवरी अदर सब्जेक्ट, ये बताइएगा इस चैनल के मकासद के बारे में. हमने वीडियो में भी बता दिया, हमने अपनी ज़बानी भी लोगों को, अपने व्यूवर्स को समझाया. आप बताइएगा चैनल का मकसद क्या पूरा होता हुआ अब वो ख्वाब नज़र आ रहा है जो शायद इस ऑर्गेनाइजेशन को 25 साल कबल जब बेसमेंट से शुरू किया था तो उस वक्त जो ख्वाब सोचा था अब वो अमल होता हुआ उस पर नज़र आ रहा है, ताबीर होता हुआ नज़र आ रहा है वो ख्वाब. शिफा और सऊद, अगर ख्वाब ना देखे जाएं तो उनकी ताबीरी नहीं होगी. हम मौला अली की बातें कर रहे हैं तो हमेशा यही तालीमात दी गई है कि ड्रीम बिग टू अचीव बिग. अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर वजी का और IMI की बाकी टीमों का कि उन्होंने 3 साल पहले मुझे जिम्मेदारी दी थी. और आज जो अपनी छोटी मोटी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसकी हिदायत और पेशकश मेरी तरफ से है, और मुझे ना सोने का टाइम मिला है, ना खाने पीने का टाइम मिला है, ना किसी चीज का, मैं कपड़े भी नहीं सही तरह पहन पाया. जो रात को शर्ट पहनी थी वही पहनी और आ गया क्योंकि काम इतने ज्यादा थे. लोग जो कहते हैं कि माशाल्लाह अच्छी काम पहनी जा रही है तो बहुत दिल में खून बढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है उसको फिर बयान करना जो है वो जरा मुश्किल है. और जैसे पता है कोविड का जमाना है, सब कुछ है, तो आसान अल्फाज में जब डॉक्टर वजी ने मुझे कहा कि यार मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक चैनल लेके आना चाहता हूँ, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मुश्किल है. सही बात. आसान अल्फाज में जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है, और शायद देखने वाले जानते हो कि मेरा और सऊद का ताल्लुक जियो टेलीविजन से है पाकिस्तान में, और हमारा बड़ा कांटे का मुकाबला होता था. हम उस जमाने के लोग हैं जब टेलीविजन था तो सर्कस नहीं बना था. तो सऊद का बिजनेस का प्रोग्राम होता था, बाजार, मेरा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता था, मैच बॉक्स, और क्या कांटे का मुकाबला होता था. और हम लोग रेटिंग में टॉप 5 में ही होते थे माशाल्लाह. तो उस वक्त हुआ था. तो मैंने डॉक्टर वजी से कहा सर आसान तरीन काम है, टॉक शो कराए, 2 लोगों को बिठाए, एक दूसरे को थप्पड़ मारे, दूसरा तीसरे को थप्पड़ मारे, जबरदस्त किसी का झगड़ा हो, रेटिंग का तीर जो है वो छत को तीर तोड़ता हुआ निकल जाए और काम हो जाए. तो जब उन्होंने कहा कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैनल खोलना है तो लेकिन 2 मिनट के लिए तो हाथ पैर के धोते उड़ गए कि करेंगे कैसे. लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि इस भीड़ चाल के दौर में हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू गेट एवरीवन बैक टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सही. हम सबके बच्चे हैं, बहुत सारे शिफा कभी भी बच्ची हम लोग के सामने, तो हम ये देखते हैं कि जब हम घरों में बैठते हैं तो किस किस्म का मवाद हमारे टेलीविजन पे चल रहा होता है. और जैसे कहते हैं कि बच्चों के जहन में जो डालोगे वैसे ही पौधा जो है वो निकलेगा. तो इंडियन कंटेंट या बाकी इंडियन कंटेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गैर जरूरी कंटेंट बच्चे बहुत ज्यादा देख रहे हैं. तो और कितने बच्चों को पता नहीं, जैसे मैंने वीडियो में कहा कि भाई 7वीं सदी ईस्वी में लेके 12वीं सदी तक हम लोग टॉप पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और अब हमारे पास कुछ नहीं है. तो यही डॉक्टर वजी का विजन था कि भाई दुनिया भर में कहीं भी कोई मुसलमान बच्चा या कोई क्रिश्चियन बच्चा या कोई हिंदू बच्चा कोई काम करता है, कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, कोई नई इन्वेंशन करता है, तो व्हाई नॉट वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पर वो आए और अपने काम को भी चेक कर सके. सही है. बाकी जगहों पे कोई गाने बजाने वालों की बहुत है, डांस करने वालों की बहुत है, उल्टी सीधी वीडियो बनाने वालों की बहुत है. अच्छा, एक चीज बोल दूं अशर, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा आपने मुकाबले की बात की है, थोड़ा सा अपना जो वो आपका फीडबैक आ रहा है ना, वो ये कहते थे रेडियो पे जब वो लाइव कॉल इन करते हैं शो में, वो आप अपना रेडियो सेट बंद कर ले, जिस डिवाइस से आप इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं उसकी आवाज का थोड़ा सा स्पीकर.
no one knows more than Ashar Bhai, who's through his work with IMI has traveled in countless countries, dozen countries, didn't see his friends or family for about a year and a half while he explored the vast reaches of the IMI family, of the IMI community. So can you speak to, you know, what you'll bring, what IMI will bring to this channel? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल था और ऑब्वियसली इसमें सब लोगों को समझना चाहिए, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बने बनाए प्रोग्राम्स नहीं रखे होते, उनको बनाना पड़ता है, उनमें कंटेंट में काफी मेहनत लगती है. यू हैव टू गेट द बेस्ट माइंड्स आउट देयर. शायर बहुत मिल जाते हैं, अदीब बहुत मिल जाते हैं, हर कोई मिल जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात कर सकें, इन्वेंशन से बात कर सकें, वो बहुत कम होते हैं. तो इसमें हमें बहुत ज्यादा फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी. और आप जितने लोग देख रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि हम लोग तबरुकात पे बहुत खर्चा करते हैं, हम मजालिस पे खर्चा करते हैं, हम दीगर अच्छे कामों पे खर्चा करते हैं. बहुत अच्छी बात है, मजीद कीजिए, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए कि ये एक सत्ता जारिया है. इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बहुत जरूरत है. हम लोग जिस्म को तो बहुत खिला रहे हैं, वही बात मौला अली की जो आपने कहा था कि अपने मेदों को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाओ, कि हम जिस्मों की तो नशो मना कर रहे हैं, लेकिन अपने जहनों को जो है हमने भुला दिया है. यही इस चैनल का मकसद है. और जो हमारा विजन है सऊद, अगर मैं कहूं कि बिल्कुल मैं अपनी सोच और अपने ख्वाहिशात के घोड़े को बिल्कुल बेलगाम छोड़ दूं कि जा भाई भाग, तो मैं ये चाहूंगा कि कल तेहरान यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर हो रहा हो न्यूरो साइंसेस के ऊपर या मेडिकल साइंस के ऊपर या समझे सर्जरी के ऊपर, तो यहाँ पर बैठा एक बच्चा उससे कनेक्ट कर सके. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंसेस, और किस्म की साइंसेस में बहुत काम हो रहा है. तो बच्चों को रागिब करें. आप जिस तरह का फीडबैक देंगे, यू कहते हैं ना शिफा, एज दे से दैट रोल मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. अगर आप रोल मॉडल सिर्फ गाने वालों को दिखाएंगे तो गाने वाले बच्चे बनेंगे. अगर आप हमारे माशरे में साइंटिस्ट हीरो बन के क्यों नहीं आता? एक प्लेयर या स्पोर्ट्स से ताल्लुक मैं कहूंगा, या एक सिंगर जो है वो बहुत एक 5 मिनट का गाना बनाता है और उसको मिलियंस ऑफ लाइक्स मिलती हैं और वो अचानक हीरो बन जाता है, बच्चों का रोल मॉडल होता है. लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि सालों मेहनत करके कोई एक चीज बनाता है, हम उसकी बनाई हुई चीज से मुस्तफीज तो होते हैं. इस वक्त ये मोबाइल फोन, ये इंटरनेट कनेक्शन, ये लाइटें, ये शर्ट, ये सब जो पहना है किसी न किसी साइंटिस्ट की जाता है, लेकिन ना वो हीरो बनता है, ना उसको क्रेडिट मिला जाता है. वो चीज हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस भी हैं चलानी, जो मैंने नहीं चलाई तो लोग नाराज हो जाएंगे. तो मुख्तसर अल्फाज में कहूंगा कि हमें आपके ताउन की जरूरत है. प्लीज हमारा साथ दीजिए, हमें मशवरे भी दीजिए, बहुत ज्यादा मशवरे देने की भी बहुत जरूरत है. आइडियाज दीजिए, जहां हम कुछ गलत करें हमारा कान भी मोड़ दीजिए कि भाई ये तुमने गलत काम कहा, ये सब कुछ. तो हम हर किस्म की चीज के लिए तैयार है और दुआ करें कि एक अच्छा इनिशिएटिव है. इस तरह की इनिशिएटिव मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूं. मैंने पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री देखी है, 5 चैनल्स में काम किया है. बाखुदा बता रहा हूं कि इस तरह का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता. ये एक इनिशिएटिव है, इसमें हमें सपोर्ट कीजिए. जी. अच्छा अशर ये बताइए कि इस चैनल में होगा क्या क्या? हमने जो चैनल की इंट्रो वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो चलाई, उसमें हमने करंट अफेयर्स, साइंटिफिक टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स प्रोग्राम. अरे स्पोर्ट्स सीन में चल क्या रहा है वैसे, ये तो बताएं. यार स्पोर्ट्स की बात ना करें, बड़ा आजकल पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के देख के हाल खराब होता है. लेकिन अभी आपने देखा कि बीजिंग ओलंपिक्स में एक लड़का तला जो है गुजरावाला का, जो कि एक स्कूल में बैठ के प्रैक्टिस करता था और स्कूल वाले उसको फ्री में जगह देते थे और वो टीन के डब्बों के ऊपर वेट रखता था और प्रैक्टिस करता था. वो 5वीं पोजीशन पे आया, सिर्फ 2 kg का वेट नहीं था, वरना वो हमें मेडल ला के देता था. 1992 के बाद हमें पहला मेडल मिलता. तो बहरहाल स्पोर्ट्स तो रगों में दौड़ता है, स्पोर्ट्स आप जो भी कह लें. और हम मजे की बात बताया चलूं कि जब मेरे भाई जो है वो इंजीनियर हैं, मेरी बड़ी जो हमशीरा है, मेरी बहन वो डॉक्टर है, और हमारे माशरे में जो बच्चों को जज करने का या उनकी काबिलियत जांचने का मेयार होता है कि या तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तो मेरे सामने वैसी कॉम्पिटिशन बहुत था कि एक डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और लोग मुझसे कहते थे भाई आपको कुछ और काम नहीं मिला. और सहाफत में भी आपने स्पोर्ट्स पकड़ी तो क्या यार आपको कुछ और जगह नहीं मिलती थी कि आपको कहा गया कि आप स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करें? तो बहरहाल वो चीज थी. लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी साइंस इंपॉर्टेंट है उतना ही स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स करेंगे तो हेल्दी बॉडी होगी तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जा पाएगी. तो क्रिकेट में हालात बड़े खराब हैं. आज अच्छा खेल लेते वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बारिश हुई, मैच जो है वो कैंसिल हो गया. आगे मैचेस से बड़ा अच्छा आएगा. तो आपने प्रोग्रामिंग की बात की, तो मैंने पूरी कोशिश की है डॉक्टर वजी के साथ और बहुत जो हमारी बहुत बड़ी एक पूरी कंटेंट टीम है कि जनाब हम इसमें हेल्थ एंड साइंसेस पे भी काम करेंगे. आप और मैं खा के बहुत मोटे हो रहे हैं, तो हमें क्या खाना चहिए कि हम दुबले हो जाएं, तो न्यूट्रिशन पे भी प्रोग्राम होगा. शादी ब्याह के मसाइल बहुत हैं और आई मीन देयर सो मच टू बी डन. लेकिन वही जैसे कि शायर ने कहा था कि चले गए क्या था वो सर,
चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं, कहीं हम लड़खड़ाएंगे, कहीं हम गिरेंगे, आप लोगों का मशवरा होगा, सहारा होगा, तो फिर हम चलते चले जाएंगे। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपको आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको स्पोर्ट्स पे नजर रखनी होती है, आपको इस मुझे चैनल ट्रांसमिशन भी चलानी है और इस चैनल की जो ट्रांसमिशन चल रही है उस पे भी नजर रखनी है हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आगे तो सब कुछ आप ही नहीं करना है। जी शिफा, बहुत शुक्रिया, और सब लोग को एक दफा फिर ईद कदीम मुबारक। जाते जाते सब आखिरी जुमला कहूंगा, जो कि मैंने सबसे कहा था कि हम बाकी तमाम चीजें करते हैं, लेकिन खुदारा ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा इनिशिएटिव शायद अब दोबारा ना लिया जाए, तो इसको कामयाब करने में दामे सखने कदमे धरमे हर तरह से जो है हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank And you, I'd just Ashar, like to thank you. mention to our viewers as well that the scroll. Thank you so much. I'd just like to mention to all of our viewers, Usher definitely, he definitely, noted very, very importantly that it's so important to keep these kinds of projects alive, and it's only possible through the donations. This is one of 70 projects that IMI hosts and sponsors and supports worldwide. So, I do encourage all of you, if you have gained anything and would like to support the work of my TV, the donation information is scrolling on the bottom. You can visit our website, imamiamedics.com. And with that, I would like to continue on with our program, and we have the really we've had a unique opportunity to have Dr. Yasser Haider, the IMI Canada president. I'd just like to introduce everyone. We're very familiar with Dr. Haider and his work, but he is a senior orthopedic consultant surgeon at Markham Stouffville in Toronto, Canada, and he leads the entire IMI Canada chapter, which is where we're also hosting this transmission. Welcome, Dr. Yasser. Dr. Yasser. Saud and Shifa, thank you so much for inviting me. And Eid Mubarak to everybody and both of you. ईद गदीर मुबारक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप IMI कनाडा के रुए रवा हैं, IMI कनाडा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइएगा। IMI के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में तो हम अपने नाजरीन को बार बार बता ही रहे हैं, और हमारे जो दीगर सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है। IMI कनाडा के बारे में खास तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, और भी दीगर चीज़ें हैं और भी दीगर बातें हैं जो आपसे हमने पूछनी है। जी डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम साउद अगेन। IMI कनाडा आज से 14 साल पहले उसका वजूद रखा गया, उसके फाउंडेशन रखी गई। उसके बाद IMI कनाडा को चैरिटी स्टेटस जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से वो भी अप्रूव हो गया है, और पिछले कई सालों से हम ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल वर्क है, जहाँ इराक में कैंप हैं, हज कैंप्स हैं, उसके अलावा जहाँ भी डिज़ास्टर्स होते हैं, जिसमें कि रिसेंटली
आपको पता है इंडिया के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी उसमें हमने काफ़ी फ़ाल किरदार अदा किया। इसी तरह जो हज़ारा ट्रेजिडी हुई उसमें भी हमने हज़ारा बच्चे, मेडिकल स्टूडेंट्स, वहाँ की डिस्पेंसरियाँ, उनके लिए हमने जो है वो इकट्ठा किया, काफ़ी सारी हेल्प जो थी। और माशाल्लाह इस वक्त IMI कनाडा उन सारे शहदा के बच्चों के लिए 4 साल की एजुकेशन जो है उनकी वो हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि IMI जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और हम UNO की एडवाइजरी काउंसिल में भी हैं। और एक बहुत बड़ा जो हमारा मिशन है वो ये है कि हेल्थ केयर जो है वो ह्यूमन राइट है और हेल्थ केयर है वो पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की एक हकूक़ बशरी का हिस्सा है। और फ्री हेल्थ केयर जिसके लिए आपको ये फ़िक्र ना हो, परेशानी ना हो कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं और मुझे हेल्थ केयर कैसे मिलेगी, मेरी जब मेरा गॉड फॉरबिड कोई सर्जरी की ज़रूरत है या हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए। तो आप जानते हैं कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम ही कुछ इसी बुनियादों पे कायम है कि जहाँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है। और इसीलिए मैं समझता था कि IMI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हम इसी किस्म के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट पूरी दुनिया में कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ये एक बहुत बड़ा मसला है हेल्थ केयर, और लोग सिर्फ इस खौफ से कि डॉक्टरों का बिल या अस्पतालों का बिल जो है वो इतना बड़ा होगा तो वो हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर से महरूम रहते हैं। बल्कि आपको पता है पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग और इंडिया में भी और इराक में भी इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाते कि वो कहते हैं कि शायद ये हॉस्पिटल वाले उनको ट्रस्ट भी नहीं है और दूसरा वो समझते हैं शायद ये बिल बनाने के चक्करों में ये हॉस्पिटल्स हैं। सो ये जब हेल्थ केयर में प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर जब इस तरह मिलता है तो इस किस्म की मुश्किलात पैदा होती हैं। सो IMI का एक बहुत बड़ा, स्पेशली IMI कनाडा का एक बहुत बड़ा रोल है कि जिसमें हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारे कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम की नैज के ऊपर दुनिया में बाकी हेल्थ केयर सिस्टम को भी चलना चाहिए। तो उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, हमने कोविड के अंदर बहुत सारे काम किए जिसमें मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट उस वक्त किए जब मास्क मिलते नहीं थे। हमने बल्कि ब्लैक मार्केट से इंपोर्ट करके इधर उधर से सबसे लेके अपनी कम्युनिटी में पहले डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर कम्युनिटी के बाहर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और इस तरह हमने एक 1-800 नंबर भी शुरू किया जिसमें लोग घबराए हुए थे कि कोविड के क्वेश्चंस थे उन लोगों को कम्युनिटी में, सो दे कुड कॉल इन एंड आस्क द क्वेश्चंस। सो इस हमने हैदर TV और TVs के साथ मिलके और बड़े बड़े अदारों के साथ ISIJ जाफरिया के साथ मिलके हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए जिसमें लोगों के क्वेश्चन आंसर्स थे वैक्सीन्स के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे बाकी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, हमने वो भी उनको मुनक्किद किया। सो IMI के काम जारी हैं इंशाल्लाह, तो और भी इसमें IMI ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर बताइएगा और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका जिक्र भी हम चाहेंगे कि डॉक्टर यासिर आपकी ज़बानी हम अपने नाजरीन को आज उसके बारे में भी बता सकें। जी, हमारे 2 इस वक्त मेजर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी तरफ हम लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। एक तो IMI का हेडक्वार्टर प्रोजेक्ट है जो कि न्यू जर्सी के अंदर है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि ना सिर्फ कि IMI का हेडक्वार्टर हो बल्कि ये जो ITV है इसका भी हेडक्वार्टर वहाँ हो, हमारे पास स्टूडियो हो। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं समझता हूँ वो है सीनियर लिविंग और नर्सिंग फैसिलिटी जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर। ये हम समझते हैं कि एक बहुत ही अशद इसकी ज़रूरत है कि जहाँ हमारे सीनियर्स बाइज़्ज़त तौर पे अपनी हेल्थ केयर अपने ज़िंदगी के लास्ट ईयर्स में वो गुजार सकें और उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त सादिक यूनिवर्सिटी के तहत हम टीचिंग हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और माशाल्लाह हमें ज़मीन जो है किसी बड़े ही जो डोनर्स फाउंडेशन जी उन्होंने डोनेट की है और उसके साथ हमारे डॉक्टर जैदी जो IMI के रूए रवां हैं और वो बल्कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में वो काफ़ी उनके प्रोमिनेंट रोल है। तो मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि IMI हर जगह कैंप लगाती है, हर जगह दूसरी फैसिलिटीज़ लेके उनमें हेल्प करती है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं माशाल्लाह, डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, कि हम अपने हॉस्पिटल्स खुद चला सकते हैं। और दुनिया में जब तक हमारी अपनी फैसिलिटीज़ जो कि वर्ल्ड हेल्थ से रिकग्नाइज ना हो
उस वक्त तक हम अपना फुल फ्लेज जो है वो काम करने में हमें दिक्कत होगी. सो कैंप्स अपनी जगह हैं, हज और जो अरबाइन के कैंप्स हैं, लेकिन एक मेडिकल फैसिलिटी ऐसी जिसमें हम अपने वो मिशन पूरे कर सकें कि लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक सबसे अवलीन फरीज़ा है. और मैं इस वक्त सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो सुन रहे हैं कि काइंडली हमारी इस चीज़ में हेल्प कीजिए. और ये आपके इदारे हैं, और जब तक हम मिल के ऑर्गेनाइज होके काम नहीं करेंगे, हमारी कौम आगे तरक्की नहीं कर सकेगी. तो अच्छा इसलिए जी, मैं डॉक्टर साहब जिस तरह से हम जिक्र करते हैं मुखय्यर हजरात का जो पार्टिसिपेट करते हैं इमामी मेडिक्स इंटरनेशनल या और दीगर जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ख़ास तौर पर कम्युनिटीज़ के लिए काम करती हैं, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए काम करती हैं और दुनिया भर में दीगर कम्युनिटीज़ के लिए भी ऑब्वियसली काम करती हैं, मुखय्यर हजरात का कितना अभी तक इन 25 साल या 27 साल कह लें इन सारे ज़मानों में साथ रहा, और आगे कितनी ज़रूरत है इन सब मुखय्यर हजरात की? देखिए, आप जब कदम बढ़ाते हैं और मिशन आपका ऐसा होता है कि लोगों को इस बात की तसल्ली होती है कि ये चीज़ जो है ये आगे जाके कौम के काम आएगी, तो सिर्फ मुखय्यर हजरात नहीं बल्कि आपको पता है बच्चे तक, और वो लोग जो कि अपना $10 या $1 या $100 या $1000 देते हैं, ये मिल के ना सिर्फ मुखय्यर हजरात जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी में से काफ़ी बड़ा हिस्सा डोनेट किया और मौला इनकी तौफीकात में और इजाफा करे, लेकिन जब तक हम ये इकट्ठे हो के कौम के तौर के ऊपर सब इसमें शामिल नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते. और इसमें सिर्फ हमें मुखय्यर हजरात जिन्होंने कि ज़मीनें दी, जिन्होंने माशाल्लाह अपनी खून पसीने की कमाई जो है इसमें शामिल की, अल्लाह उनको 10 गुना ज़्यादा अपने वादे के मुताबिक देगा, लेकिन जो वो हजरात हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी में से जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हमें उनकी भी हेल्प मिली. और इन ऐसे मौक़ों के ऊपर हमने देखा कि वो लोग जिनको हम समझते थे कि शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से हमारी काफ़ी सपोर्ट की है. और माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये काफ़ी हद तक अपनी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर चुके हैं. आखिरी चंद कदम हैं और हम चाहते हैं कि कौम हमारी इस सिलसिले में हेल्प करे. हम बहसीयत फिजिशंस के, नर्सों के, पैरामेडिक्स के और बाकी जो हमारे यूथ विंग हैं, वुमेन विंग हैं, हम सारे अपना टाइम, अपनी जो माली हमारी कुव्वत है उसको हम बरूएकार लाते रहेंगे, लेकिन बगैर कौम की शमूलियत के ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने कि ये जो हमारी कोशिश होती है, जो फ़र्दन कोशिश करते हैं, जो लोग फिर मिल के बैठते हैं, जो एक बेस बनाते हैं, उसके तहत जो कोशिश होती है उसमें और लोगों का साथ फिर शामिल होता है, तो जाहिर है इसी तरह से कतरा कतरा समंदर बनता है. जब लोग शामिल होते रहते हैं, हम चलते गए और फिर कारवां बनता गया. जाहिर है लोग शामिल होंगे और ये कारवां आगे चलता रहेगा, और इसी तरह से हमारी कोशिशें भी करामत साबित होती रहेंगी और कम्युनिटी को सर्व करते रहेंगे. ये बताइएगा, जो कैलामिटीज़ आती हैं, आपने हज़ारा का जिक्र किया डॉक्टर साहब, कैलामिटीज़ और इस तरह के जो ऐसे वाक़यात यानी अनहोनियाँ उनको कहेंगे, जो ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, उसमें इमामिया मेडिक्स किस तरह से आज तक मदद करता रहा है और आगे भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसी कैलामिटीज़ को कवर करने के लिए या उसमें काम करने के लिए, उसके बारे में भी हमारे डोनर्स ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे. देखिए, कैलामिटीज़ में बहुत अच्छा सवाल आपने किया साउद भाई. कैलामिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है टाइमिंग. और टाइमिंग जो है इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कैलामिटीज़ में अगर आप जैसे जस्टिस में देर हो जाए तो वो जस्टिस नहीं रहता, इस तरह कैलामिटी में भी अगर हेल्प में देर हो जाए तो वो हेल्प जो है वो हेल्प नहीं रहती. तो कैलामिटीज़ में जो रिस्पॉन्स है कितनी तेज़ी से हम देते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल. तो मैं आपको अपने तजर्बे से बता सकता हूँ कि जब ये कैलामिटी हुई हज़ारा की, तो हमने फैमिली से डायरेक्ट जूम के ऊपर बात की
اور بلکہ ان فیملیز سے ہم نے ڈائریکٹلی پوچھا ود ان ڈیز کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کرتے کہ گورنمنٹ کیا ہیلپ کر رہی ہے یا باقی ادارے کیا ہیلپ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے جو اور بھی آرگنائزیشنز تھیں جو کہ اس معاملے میں ہمارا ہیلپ کرنا چاہتی تھیں، جن میں ہوپ فاؤنڈیشن کا نام لوں گا، جس میں ہمارے ایم ڈی آئی جو کیلگری کے ہیں ان کا نام لوں گا، کہ ان لوگوں نے ہمیں کہ وہاں ضرورت کیا ہے اور کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گا آج ناظرین سے کہ ہم صرف آئی ایم آئی کے پلیٹ فارم کو اکیلا لے کے چلنا نہیں چاہتے. ہم اس پوری قوم کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں جن کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس ہزارہ کی یہ میں اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ جو ٹائمنگ تھی وہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ اس میں ہم یہ فیل نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے ان لوگوں کو کہ ہمیں جو ہے ہم تنہا ہیں اور گورنمنٹ یا جو اور ادارے ہماری مدد نہیں کر سکے. تو ہم نے ود ان ویکس، ایکچولی 2 اور 3 ویکس، ہم نے ان کی ایجوکیشن، ان کی ساری ذمہ داری، بلکہ یہ نہیں، آئی ایم آئی کینیڈا کے 2 بڑے جو عہدے داران تھے کراچی سے، انہوں نے وزٹ کیا. وہاں جو لوگوں کی ضروریات تھیں، اسکولوں کی، کپڑوں کی، وہ سب ان کی جو ہے ہم جتنی کر سکتے ہیں ہم نے کی. کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، جو بھی چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہمیں ود ان اے ویک یہ ایمرجنسی ایک کال آئی، اور ہمارے ایک بہت ہی فعال رکن ہیں جنہوں نے ایڈمنٹن سے ہمیں فون کیا کہ انڈیا میں فلاں جگہ کے اوپر اس وقت شدید قلت ہے کہ آکسیجن، آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 مہینے پہلے کہ کیا حالت تھی انڈیا کے بنگلور اور ان ایریاز کے اندر، کہ لوگ بغیر آکسیجن کے مر رہے تھے. بلکہ جو خاص کر مسلمان کمیونٹی جو تھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو ایک دن کے اندر چند گھنٹوں کے اندر ہم نے فنڈ ریز کی، اور وہاں تقریباً 50-60 سے زیادہ جو آکسیجن کانسنٹریٹر تھے وہ ہم نے ود ان آئی تھنک 2 ویکس، کچھ پہلے ہی آلریڈی وہاں جا رہے تھے، ود ان 2 ویکس وی گاٹ دیم آن سائٹ. سو آئی ایم آئی از اے گلوبل ہیومینیٹیرین میڈیکل آرگنائزیشن. یہ ہمارا صرف ایک فیسٹ ہے، اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس طرح ان کی بہت ساری فیسٹس ہیں امام علی کے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ یہ ایسے تھے، ہم جیسے تھے. اور پولیٹیشینز کے لیے بھی وہ ایک مشعل راہ ہے، صوفیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، وہ علماء کے لیے بھی مشعل راہ ہے، وہ سائنسدانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. اسی طرح آئی ایم آئی ایک چھوٹا سا ان کے مشن میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، لیکن ہم بھی مختلف جہتیں ہیں آئی ایم آئی کی. اور اس جہت میں ایک جہت یہ آئی ٹی وی ہے، جس میں ہم ایجوکیشن، لوگوں کو اپنی کاروائیوں اور اپنی ایکٹیویٹیز سے ان کو آگاہ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے امام علی کے چاہنے والوں کو کہ شام میں امام علی کے متعلق لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ امام علی نماز پڑھا کرتے تھے. تو جو میڈیا ہے اور جو یہ ٹی وی ہے، اور اس میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں، اور جو حق اور سچ بات ہے اس کو اجاگر کریں، اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ ہم آئی ایم آئی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ضرور کم از کم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا ڈاکٹر یاسر، اور ہمیں گلوبل آئی ایم آئی گلوبل کے بارے میں اور جو ڈریم پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں، ہمارے ناظرین کو، ڈونرز کو، ویورز کو، سب کو بتایا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ظفر بھائی، میں جانے سے پہلے صرف آپ کو ایک امام علی کی ایک میں نے چھوٹی سی سیئنگ ہے وہ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، ہے انگلش میں، تاکہ میں لوگوں کو امام علی کی جو پرسنالٹی ہے، آ چکے عید غدیر ہے، تو اس سلسلے میں نے یہ کوٹ نکال کے میں چاہتا ہوں کہ سب اس پہ توجہ سے سنیں. امام علی فرماتے ہیں، یور سکنس از فرام یو بٹ یو ڈو ناٹ پرسیو اٹ and your remedy is within you, but you do not sense it. You presume you are a small entity, but within you is unfolded an entire universe. You are indeed the evident book by whose alphabets the hidden becomes manifest. Therefore, you have no need to look beyond yourself. What you seek is within you if only you reflect. زبردست.
Thank you. Thank you. So much, Dr. Yasser, and commendable work by IMI Canada, and you lead the force. And as you said, the purpose of this platform is to combat misinformation and promote information and education. So thank you so much for that. As we move forward, we have just like Dr. Yasser, many IMI stalwarts and community members that will be sharing some votes of confidence and special messages. Let's watch. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we believe that it is a very important and crucial step for our community and of course for broader public, with the purpose of tabligh, with the purpose of conveying the message and rich culture of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam across the world. This launch is happening on the day of Eid al-Ghadir, on this great day, on this great occasion, where our hearts, our minds, and our souls are all connected to the central personality of our school, Mawla Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, and his leadership and imamat. His leadership and imamat and his personality as a whole has number of very, very outstanding, of course, characteristics. But I would like to draw your attention to two very important aspects of his personality and his leadership. Number one is justice, and number two is rationality. I am delighted to congratulate IMI on this great occasion that they are launching a new television channel. And I was just hearing from Dr. Waji Rizvi, the brilliant leader of this organization, that they are going to focus on academic issues. And I thought this is a great step, the reason being that we have many channels on social media, on electronic media as well, which are mostly focused on politics, news, which is important. I'm sure this institution is going to play an extremely important role and will significantly contribute towards people's search for truth, people's thirst for knowledge and education, and I wish them the very best of luck. Very excited to hear that IMI is coming up with a scientific and medical family channel. A channel of this magnitude and idea was greatly needed in the Muslim world. It is sure to help highlight the glorious Muslim scientific past and
Welcome back, everyone. And we're just hearing some messages from Maulana Aftab Haider of South Africa, Dr. Umar Saif, and Dr. Hassan Abbas. So, many votes of confidence, and we thank them for their messages. Next, Sauda, I'd like to, keep the program moving. We have the distinct honor of having Dr. Huma Naqvi join us next. She's the former IMI Global President and has now taken on the reins of IMI's Women's Wing. She's Global Chair. She's also, a powerhouse, an assistant professor at Albert Einstein College of Medicine, a specialist in geriatric rehabilitation, and she spearheads our physical medicine and rehabilitation project in Iraq. So welcome, Dr. Huma. Assalamu alaikum, Dr. Saiba. Walaikum assalam, Saud and Shifa. Thank you so much. First of all, I'm so happy and excited for this great day. Congratulations on this big achievement, and congratulations on Eid-e-Ghadir. Congratulations to you as well. Congratulations to you as well. आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, इसके साथ साथ ग्लोबल प्रेसिडेंट, और प्रेजेंटली आप विमेन विंग को देख रही हैं. तो जो विमेन विंग की एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में तो बाद में बताइएगा डॉक्टर साहिबा. ये बताइए, एज अ प्रेसिडेंट योरसेल्फ, ग्लोबल प्रेसिडेंट ऑफ इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल, आपने किस तरह से जो एक ख्वाब था, जो जिसके बारे में सोचा था, जो प्रोजेक्ट्स सोचे थे, वो एक ख्वाब सोचा था और वो ख्वाब देखा था, और फिर उसके बाद उसको अमली ताबीर उसको अमली जामा पहनाते गए. एक के बाद एक साल गुजरते गए. साल के बाद दहाई गुजरी, 2 दहाइयाँ गुजरी, ढाई गुजर गई तकरीबन. अब आप ये बताइए, जो एक पौधा लगाया गया था, जितना तनावर दरख्त वो माशाल्लाह से बन गया है, जो ग्लोबली अब इसकी प्रेजेंस मौजूद है IMI की, और जो प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने अंडरटेक किए हैं, उनके बारे में हमें बताइएगा. एज अ ग्लोबल प्रेसिडेंट आपने किस तरह से उनको टेकअप किया, एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? देखिए, ये तो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है. यही चाह रहे हैं हम. जी, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. तो पायनियर्स ऑफ IMI, डॉक्टर वजीर रिजवी, डॉक्टर रिजवान काज़मी, शबी जैदी एंड मेनी मोर, उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उनका ख्वाब, उनकी जिद्दोजहद, उनकी मेहनत मशक्क़त आज ये रंग लाई है कि we have reached to a point where we can convey our message to the whole world. So it's a big achievement, alhamdulillah. और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स को कहने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि किया जाए. आपके वीडियोस बहुत अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मेरी बड़ी ख्वाहिश और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज इस टीवी के लॉन्च होने पे, कि IMI as a medical professional body, they used to do a lot of medical camps around the world. मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव में, मुल्कों में, शहरों में जाया करते थे, और वहाँ जाके हम तालीम और स्किल्स और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग we used to give to the people by traveling, by spending so much time and everything to educate them. And now I can see and I can vision that with the initiation of this Imamiya Medics TV, we can do this job very conveniently and easily. And effectively. Effectively. तो बहुत ही अच्छा होगा कि ये जो नॉलेज फैलाने का जो सिलसिला है, वो इतनी आसानी से इस टीवी चैनल के ज़रिए हम पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं. आज इतनी मौला अली मौलाए कायनात का दिन है, इतनी खुशी का, और सब लोग बहुत सारी सेइंग्स दे रहे हैं. तो मुझे भी जो सबसे अच्छी लगती है सेइंग, वही मौला अली की, कि everything decreases when you expend it or give away, accept the knowledge. So that's the of IMI, that the more we are going to do, and this channel will work in spreading the knowledge and word. So ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. जितनी भी तारीफ की जाए मीडिया टीम की, हेडक्वार्टर टीम की, कि ये बहुत ही दरीना ख्वाहिश और ख्वाब पूरा हुआ है. And Dr. Huma, you know,
Go ahead, Shifa. Sorry, I just wanted बहुत सारे to, सवाल हैं. I just wanted to, ask you. I know we're going to play some of the highlights of the Women's Wing's activities over the years, but if you can speak to a little bit about what the Women's Wing does, the role of women in the organization, and what the Women's Wing what our goals are. Right. So basically, the women were with IMI from the very first day. Wives, daughters, sisters, they were with the pioneers of IMI from the very first day. But for the last several years, we decided to reorganize this women wing with some specific goals and objects so we can be more effectively help the communities. So in 2019, we reorganized Women Wing, which started from New Jersey, and we sat together as a group of ladies, and we did a need assessment survey to find it out what are the actual needs of a community. And depending upon that, we invite the women from all walks of life, not just physicians, not just dentists and pharmacists, but women from every walks of life, because we think that every woman has a special talent. Allah subhanahu wa ta'ala has given everyone a very special talent which he or she can use to help the communities. So we decided to explore these talents in our ladies, our community women, and groom them so they can help. So depending upon that, we organize our women wing into several subgroups so they can work efficiently, and we make them the leaders because we want the women leaders so they can lead the families and the community. For example, we have several groups. One of them is Stay Healthy group, another is Literary group, so and Women in Medicine. So there are many. At this point, we have 10 subgroups which are working efficiently on different levels. The main goal of this IMI Women Wing is threefold. It is still an integral part of Imamiya Medics International, and we work very closely and collaboratively with the main IMI chapters. But the main goal is to work on the women health by prevention, by education, by training. And the second is to educate, not just the education at Western level, but on the remote areas, the underserved countries or underserved areas where the education is much needed. And the third goal is to empower women, both educationally and financially, by training them with specific skills, by giving them financial advices, stability. So these are the three main areas we are working. And inshallah, the way it's growing, it started from one part of the Western world, and now it's spreading to the different parts of the globe, like India, Pakistan, UK, Germany, Canada, and now in Africa. So Alhamdulillah, it's growing, and our goal is to make the women of our communities strong so they can build up strong communities and help the humanity at large. I just want to use the language for our non-Urdu speaking women wing. So we can have like a little bit of more interactive discussion. So basically, जी हाँ, basically यही 3 आइडियाज़ हैं कि हम ख़वातीन की हेल्थ पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और उनको एजुकेशन के लिए हर लेवल पे और उनको स्किल्स एंड ट्रेनिंग सिखाने के लिए. सही बात है. अब ये डेवलपिंग कंट्रीज हों या डेवलप्ड कंट्रीज हों, जाहिर है इसी बात पे तवज्जो दी जाती है कि विमेन एम्पावरमेंट जब ही मुमकिन हो पाएगी जब विमेन एम्पावर होंगी, जब उनके पास तालीम होगी, शऊर होगा, उनकी सेहत सही होगी, और जब एक माँ की सेहत सही होगी, एक औरत की सेहत सही होगी, तो जो अगली नस्ल वो परवान चढ़ा रही है उसकी भी सेहत सही होगी. पूरा माशरा इसी तरह से जबरदस्त तरीके से एक तरह से इंटीग्रेट करके तरक्की कर पाएगा. क्या मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी यकीनन. और हमारे पास तो हमारे मज़हब में, हमारे दीन में ऐसी जो है मिसालें मौजूद हैं जिनको लेके हम जो है ना सिर्फ अपने आप को, अपने ख़ानदान, बल्कि अपनी कम्युनिटीज़ और इन लार्ज ह्यूमैनिटीज़ को हेल्प कर सकते हैं.
तो जो है इतनी बड़ी बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि नामे बुतू सुनते ही ताजीम से उठो, यूं भी किया करो सुन्नत रसूल की। तो मौला अली की बात हो और बीबी फातिमा की बात ना हो, और ये जो है मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, और चाहे वो मैदान जंग हो, चाहे वो अस्पताल के बिस्तर हो, वी वांट द वुमेन टू बी देयर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सही बात है, बहुत जबरदस्त बात कही आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला, और विश यू गुड लक एंड विश एवरीवन best of luck for future endeavors. And we really do look forward to, some women's wing programming. That is also a key feature of the channel going forward. So what do we have next, Shifa? So I have a few more messages from our stalwarts. They did pour in ahead of our inauguration. So we'll share some more of those before we go forward. Challenge. Let's watch. ओके जी, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आज हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में माई टीवी की, एमआई टीवी की इस लॉन्च ट्रांसमिशन में भी शामिल हुए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म भी हुआ है। हमारे जो पास्ट प्रोजेक्ट्स इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल के रहे हैं उसके बारे में भी उनको जानने का मौका मिला है, जो प्रेजेंटली जो काम चल रहे हैं और जो आगे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी उनको जानने का मौका मिला है। जी शिफा। Definitely, and all of this work is ongoing, and we do encourage you to join in whatever way possible. And so we are joined by two of our key volunteers, people that have given so much to the organization, and they're here to talk about something very exciting: IMI's North American Conference, Mehdi 2021, Medicine, Equity and Health, Diversity and Inclusion. So we'll be hosted by both Dr. Kiran Ijaz and Mohammed Wepi. Dr. Kiran is the coordinator of the North American Conference. She's a physician from Pakistan. She's associated with Emory University and works in cardiology clinical trials, brings a wealth of knowledge, and also runs the Journal of Medics International. We also have Mohammed Wepi here, the conference's youth ambassador, an aspiring physician. He graduated from Georgia State University, so congratulations. He spent the last 3 years working at Emory's clinic, Clinical Cardiovascular Research Institute, and is going to be joining PCOM as a medical student in the fall. So welcome, Dr. Kiran and Mohammed. Welcome. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को हम लोग की आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल, we can hear you. Thank you. Assalamualaikum everyone. Thank you so much for having us. Eid Mubarak to everyone. Khair Mubarak. Khair Mubarak. Khair Mubarak. And then सबसे अच्छी बात है कितने अच्छे दिन पे हम लोग जो है ये लॉन्च कर रहे हैं, और माशाल्लाह सब जो है इतनी अच्छी सेइंग्स कह रहे थे। अभी मैं यही सोच रही थी बैठ के, सभी ने अच्छी बोल दी, अब हम क्या कहेंगे। बहुत कुछ है, तो खत्म होने वाला सिलसिला है। बेशक बेशक। शख्सियत ही ऐसी है
इमाम अली की कि जितना बात करें कम है। बेशक बेशक। सो हम बेसिकली इनवाइट करना चाहते हैं अटलांटा के तमाम शिया जो यहाँ की कम्युनिटी है उसकी तरफ से तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं मुहर्रम के बाद अक्टूबर का आखिरी के जो 3 दिन हैं 29th, 30th और 31st, उस दिन हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो अटलांटा मैरियट कॉन्फ्रेंस रिजॉर्ट पे है। तो वहाँ अच्छी खासी जगह है। हम चाहेंगे कि बहुत सारी जो है फैमिलीज़ आएँ, डरे ना, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों का ख़्याल रखें और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है, इसमें फैमिलीज़ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। यूथ का मैं मोहम्मद वहबी से चाहूँगी कि वो बताएँगे अभी थोड़ी देर में। देन फिर ख़वातीन के लिए एक पूरा अलग से प्रोग्राम है। फिर जो एकेडमिक्स है उसके अंदर भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि फिजिशियंस, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, इवन टेली हेल्थ मेडिसिन जो है वो आजकल बहुत फेमस है और लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसमें, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। और तमाम वो फिजिशियंस जो CMEs के लिए इधर उधर जाते हैं, तो हमारी कॉन्फ्रेंस भी CME से रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो और हम चाहेंगे कि आप लोग आएँ, पूरा वीकेंड स्पेंड करें। हमारे यहाँ बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं और होपफुली यू विल एंजॉय द एंटायर वीकेंड विद अस। मोहम्मद आप बताइएगा। मोहम्मद, गो अहेड, प्लीज स्पीक अबाउट द यूथ, the part of the youth conference. Yeah, of course. Well, thank you guys again so much for having me. As stated earlier, I'm the youth ambassador here in Atlanta, and I'm more than happy, very honored to be able to host everybody here in Atlanta, hopefully for an amazing conference. I had the honor a couple of years back of becoming a member of IMI and actually also participating in a conference actually that happened in California, and that very much piqued my interest in continuing my participation here with the youth, especially trying to get our youth more involved. And through this, opportunity, I'm hoping to do just that. So, as stated earlier, the conference will be going over that last weekend of October. So from the 29th to the 31st. We have a lot of events that have already been kind of scheduled, and we're working around a lot of those things. But specifically for the youth, one thing that I'm trying really hard to do, as with the help of course, Shifa and a lot of the other youth here in Atlanta, is we're trying to get the youth more connected with the rest of the population. It's from my time in the conference in California, it was nice to see people stepping in and wanting to help, but I think it's another step to further push us into connecting us with everybody else a little bit more. So first day, of course, it's going to be a very big introduction day. So we're going to be having a big youth mixer to get everyone acquainted with each other, as well as the women's mixer and a matrimonial event for anyone who may be interested as well. Moving into Saturday, the day is going to be split up between, many different kind of events, kind of pertaining to whatever anyone may be interested in participating in. We have a lot of scientific sessions, but, we also have a lot of the youth programs as well as women's programs throughout the day. We also have a medical ethics lecture that's going to be very big for us in the afternoon. And that's something, of course, that we invite everybody to attend, youth and everyone and all. And throughout the day as well, that, we'll have a salat and childcare, going on for everyone who's bringing children with them. They'll be definitely in great hands and right on nearby as well. That same Saturday night, we'll be having a gala dinner, and that will also encompass everyone and all. And with the help of a lot of the youth members here in Atlanta, I'm trying to plan also a bonfire for after the dinner. So this way the youth can also continue to kind of facilitate those connections and kind of continue to meet and grow with one another. And Sunday is going to be very similar, but there's going to be a lot of youth workshops that day pertaining to continuing to build on those bridges, creating cultural bridges with one another.
and continuing to grow as a community, all in all. So we are very much looking forward to having everyone here in Atlanta, and hope to be seeing everyone soon come October. So there's a lot to look for. A lot to look forward to, yes. Definitely. And you know, you've highlighted both the women's wing programming, the youth programming, but it's a special honor for us to invite, of course, physicians, dental professionals, pharmaceutical professionals, for accredited CME, continuing medical and continuing education courses. So, you know, it's a unique opportunity. We have so many of these parallel events, but can you also speak to, you know, what we have in store for our young professionals, some poster presentations and any of those events? Yeah, of course. I mean, we have poster events, of course, going on throughout the day. But for the young professionals, we have a young professionals luncheon that's going on specifically on that last day on Sunday, where we're going to be working on a lot of workshops that pertain to, you know, a very wide variety of topics pertaining anywhere between social injustice and creativity within ourselves and then within our community, and a little bit as to what I was speaking on earlier with, you know, creating a cultural kind of bridge between everyone. So we will have a workshop to elaborate and explain on that a little bit more. And well. Dr. Kieran, can you speak to the venue? So I know the Atlanta folks have a really exciting venue for us chosen. Can you speak to the scenery, what we can expect? Yes, and so it's going to be around autumn. So Georgia is famous about all the orange and maroon trees around that timeline. So and the resort that where we are holding this conference is right in the middle of Stone Mountain Park. You have a lake next to it. So our breakfast will be on the lake, basically on the deck. And then you can enjoy all the lectures. And then in the evening, you can have like really good leisure walks. And there's like zip lining for kids. There's like so much to do over there that I can't even summarize it, like, you know, in this short phase. But I would recommend everyone to start registering. On our Imamiya Medics website, the registration link is available. And right now, all the rooms, like we have made we get half the cost of the rooms, and we are able to actually get you in as soon as possible. We are trying to arrange for bus services from New Jersey, New York, Florida, and if like you in your own community, in your gathering, in your city, in your state, you feel like you have people that would like to do a bus together and come, just contact us. You can contact Shifa or you can contact me. Our information is on the IMI website, and we can help you do the logistics calculations then. So are we invited, guys? Yes, of course. I hope so. You enticed us so much that zip lining and breakfast on the deck, and this and that and all. So I was kind of enticed and pretty much interested in coming to America. You know, and just not that, you know, I'll also ask our presenters to let us know. I know Mohammed and Kieran have some plans for after the conference on Sunday night. So what do you have planned for us then? Mohammed, go ahead. Share the surprise. I'm sorry? Go ahead. Share the surprise, man. Well, for the Sunday night, this is also pertaining a lot to the youth, but we are trying to get a bus service more so specifically around Atlanta to kind of help out the youth, see what Atlanta has specifically college tour wise, you know, getting them to get introduced to different universities, learn more about the universities down here in Georgia to anyone who may be interested in any of that, as well as, you know, some sightseeing along the way. So that's something that we're very excited. Other than having CNN headquarters in Atlanta, you have something else, right? Oh, yes. Oh, I mean, yeah, there's so many, you know, so many things to come and see, you know, with the Georgia Aquarium, right. Piedmont and Centennial Park. It's a very beautiful area down here. So looking forward to have everybody. Nice. And, you know, the question on everyone's mind is what we're doing in terms of, you know, of course, the Delta variant has not left our community. So if Kieran, if you can, you know, assure us, you know, you might have the CDC headquarters nearby. So let us know how you plan for that.
Yes, well, CDC headquarters is exactly next door to our workplace, so we keep up with all that. So the main thing that we are planning as organizers, of course, we want everyone to be safeguarded against the virus. So we are encouraging everyone to get vaccines, but then we are, for those like the kids who are younger than 12 years, who are not getting, the guidelines haven't come forward. So we are trying to increase the venue. That is the reason we choose the venue, that we can have social distancing within the halls. We are not going to overcrowd the room. The specific rooms we have divided all the subcommittees basically into separate rooms, so we can have more spread out people. And then that is one of the reasons that we are trying to have encourage people to have outside food, like on the deck, so that because outside you can take off the mask. That's what the current CDC guidelines are. And we do encourage people to get PCR tested. I believe people who are going to be flying in from Canada will already get it as part of the airline process. So that's one thing. But then we encourage people to do frequent hand washing, and of course we are going to have sanitizers throughout the venue. So we are trying our best to actually prevent the spread of any virus. Inshallah, we look forward to it, and thank you very much, guys, both of you. Very much to look forward to, along with IMI's other projects. Thank you very much, both of you. No, thank you guys. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you. And you can register for the conference at our website, imamiamedics.com, or conferences.imamiamedics.com. So please register, and we hope to see you all soon. Inshallah. Thank you. So going forward, thank you to our guests. We have another very exciting video produced about my TV in Urdu. So we'll take a look at that. वेलकम बैक। आप सबको थोड़ी देर में वीडियोस चलाते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, वो तो हर मौके पे कोई ना कोई हो रही थी। दुनिया अच्छी खासी चल रही थी। 2020 आया और बड़ा हम प्लान बना रहे थे कि 2020 में ये कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे। दुबई 2020 एंड टोक्यो 2020 और आई थिंक कतर 2020 था या पता नहीं 2022 था, आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत सारे प्लान्स थे 2020। लेकिन अब एक ऐसी दुनिया बन गई है जो कि प्री 2020 थी, एंड नाउ देयर इज अ वर्ल्ड व्हिच इज पोस्ट 2020। नाउ वी आर लिविंग इन 2021 और इस पैंडेमिक को झेलते हुए अभी भी झेल रहे हैं। डेढ़ साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, एंड still trying to cope up with it as much as we can, get vaccinated, healthy रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। एंड यू नो व्हाट, हाइजीन की अपने आप की जो हमारा ईमान भी है कि कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, जाहिर, और हाइजीन रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। जी शिफा, आप भी यही कुछ करती होंगी, जाहिर है।
And definitely, the last 18 months specifically, even at the IMI headquarters and with all of our chapters in about 17 countries, we've been working nonstop, 24/7. When our job ends, IMI Pakistan wakes up, and IMI India and IMI Iraq wakes up. So the COVID response has been, for our frontline workers, just astounding, and may Allah bless them with the sawab that they have accrued in just this short amount of time trying to save us from this pandemic. But it is in the research that's so important, and you mentioned hygiene, and another critical topic of discovery and research is water. And so we have Maryam here, Maryam Sayed, who's going to be sharing with us a really exciting presentation. Welcome, Maryam. Maryam is a software engineer from the Silicon Valley and is actively involved with IMI on multiple fronts. And then take it away, Maryam. Assalamualaikum, everyone. Walaikum Thank you assalam. so much for having me, and Eid Mubarak to everyone. Same to you. Hope you're all doing well. So my presentation is on the importance of water, pretty much every aspect of it. So if we can just display that, then. And while we wait, Maryam, I know you have a background in software engineering, so STEM obviously is so interconnected. So how do you find the research that you do now? How does it inform by the work that you do in software engineering? Yeah, so STEM in general is, a blend of science and math. And so software engineering can be focused in many different areas. And I think that really helped me to create this presentation, especially the animation side of this. And then my interest has always been in science as well. So researching water on Earth, in the solar system, in the body, and in many different religions, has been something very interesting to me. So I think we're just waiting on the screen sharing, but please, Saud, please continue. No, I was just waiting for the presentation. क्योंकि पानी तो जिंदगी है. पानी नहीं होगा तो 70% of this earth is also water. So we would love to see what you want to tell us about. Sure. And so I think right now what we're seeing is the screen. I think once you share the water presentation, I think we'll be able to see it. Okay. Yeah. I think we're almost there. And we thank everyone for, obviously bearing with us and seeing the behind the scenes. This is a nice tour. So I know Maryam can speak to how intricate the process is. Yes, definitely. It is a lot more complicated than it looks. But without further ado, here is my presentation. And water, I am sure, Maryam, you'll go ahead. Okay. All right. So we'll begin with water in its most basic form on Earth. So what is water? Water is a substance composed of the chemical elements of hydrogen and oxygen existing gaseous, liquid, and solid states, hence the name H2O that we're always hearing. For example, in a solid form, there is frozen water or ice, or steam, which is in the form of gas, and water in its liquid form, which is a tasteless and odorless fluid. Okay, so if we move on to the next slide. We have an overview of water. So the Earth consists of over 326 million trillion gallons of water, meaning about 71% of the Earth's surface is water, or 333 million cubic miles. There are 4 oceans that we've probably all heard of: the Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic. They hold 96.5% of the Earth's water.
Water also exists as a vapor in the atmosphere, in the rivers and lakes, ice caps and glaciers, in the ground and in the soil moisture, and in aquifers. So water is never sitting still. Due to the water cycle, the planet's water supply is moving from one place to another constantly. And here we can see in the next slide. Of water distribution. Just one more slide over. Okay, so here we have a diagram of the water distribution on Earth. This is a diagram called the hydrosphere, which is a sum of all the water on Earth and the water cycle that distributes around the planet. So about 97% of the Earth's water are oceans, out of which only 3% is fresh water. And that fresh water consists of 30.1% groundwater and 68.7% ice caps and glaciers. And then we have only 0.3% surface water, which are swamps, rivers, and lakes. So here we can move to the next slide. One more over, please. Okay, so why is Earth unique? Earth is a unique planet in the solar system because of its abundant surfaces of water as displayed in the diagram. So because of our orbital distance from the sun of about 94.5 million miles, in addition to our unique atmosphere, gives Earth the right temperature to have water as a liquid, whereas planets such as Venus are too hot or Mars is too cold. Okay. So here in the next slide, we can see the water cycle. So here's a diagram of the water cycle, which shows the continuous movement of the water within the Earth and the atmosphere. Liquid water from oceans evaporate into water vapor, and then that condenses and forms clouds, which precipitates back to the Earth in the form of rain or snow. Okay, so now back to the big picture, we can see how water functions in the solar system. So where else is water found? The chemical elements in water, hydrogen and oxygen, are some of the most abundant elements in the universe. Astronomers see the signature of water in giant molecular clouds between the stars, in disks of material that represent newborn planetary systems, and in the atmospheres of giant planets orbiting the other stars. So water in our solar system, in the next slide. Okay, so there are several worlds thought to possess liquid water beneath their surfaces, and many more that have water in the form of ice or vapor. So water is found in comets and asteroids. It's found in the dwarf planet called Ceres, and the atmosphere and interiors of Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune also contain enormous quantities of liquid, and their moons and their rings also have substantial icy water. So according to NASA, the 5 icy moons of Jupiter and Saturn show strong evidence of having oceans beneath their surfaces. And they're called Ganymede, Europa, and Callisto at Jupiter, and Enceladus and Titan at Saturn. So if we move to the next slide, we can see that there is actually water on Jupiter and Saturn. So scientists using NASA's Hubble Space Telescope recently provided powerful evidence that Ganymede has salt water, subsurface ocean likely sandwiched between 2 layers of ice. Europa and Enceladus are thought to have an ocean of liquid water beneath their surface in contact with mineral-rich rock, which may have the 3 ingredients needed for life as we know it, which is liquid water, essential chemical elements for biological processes, and sources of energy that could be used by living things. So NASA actually conducted a Cassini mission, which revealed that Enceladus has an active world of icy geysers. Recent research suggests that it may have hydrothermal activity on its ocean floor, an environment potentially suitable for living organisms. Okay,
So here we can see water on Mars. So there have been many missions to Mars to see if there's any sort of water or life on there. And so NASA spacecrafts have found clear evidence that Mars had water on its surface for long periods in the past. What happened to that water? Some of that water has frozen into polar ice caps below the surface of Mars. The rest of it might have been stripped away by the wind-charged particles from Mars's proximity to the Sun, causing the planet to dry out, according to NASA's MEVIN mission. So here, if we move to the next slide, we can see how water functions in the body. Okay, so water and organisms. So as we know, water is a necessity for every living organism. The majority of living species contain a total of 70 to 76% water in their bodies. Fish and plants contain about 80 to 90% water, and the adult human body contains up to 60% water. So in the human body, water is a vital nutrient to the life of every cell. It acts as the first building material. It regulates our internal body temperature by sweating and respiration. The carbohydrates and proteins that our bodies use as food are metabolized and transported by water in the bloodstream. It assists in flushing waste, mainly through urination, acts as a shock absorber for the brain, spinal cord, and fetus, forms saliva, and lubricates the joints. So here in the next slide, we can see the distribution of water in our body. And of course, cells contain 60% of all the water in the body, with roughly 1/3 of the remainder in the surrounding cells. Some organs contain much more water than others. The brain and the kidney possess the highest percentage of water. The bones and teeth contain the lowest proportion. So here we can see how the water is divided in different body parts. So moving on to the next slide. How much water? So recommended water intake. Contrary to popular belief, which we may have all heard, we don't actually all need 8 glasses of water a day. There's no set daily amount of fluid that a person should drink. The amount varies depending on age, sex, weight, health, physical activity, and the climate where a person lives. And so here we can see, depending on the age and the gender of the person, how much is the recommended fluid intake. So moving to the next slide, what happens when we don't have enough water? So we have something called dehydration, which is a condition where the human body doesn't get enough water or electrolytes. It's commonly caused by illness. A person may be losing electrolytes and water through sweating and waste elimination, such as urination, vomiting, or defecation. And as a result, you may feel fatigued because your blood pressure will drop. You may not be able to focus because water concentration in the brain will decrease, as 75% of the brain is water. Your digestion may get off track. You may be irritable or gain weight due to food cravings when you are actually in need of water. So moving on to the next slide. What happens when there is too much water? So there's a condition called water toxicity. The next slide. So when you drink too much water, you may experience water intoxication or a disruption of brain function. This happens when there's too much water in the cells, causing them to swell. And then a person may experience things like confusion, drowsiness, and headaches. It can also lead to certain more dangerous conditions. So to avoid this, obviously do not drink when thirsty, monitor the color of your urine, and monitor the amount of bathroom trips you're making in a day, as 6 to 8 times is considered normal. So finally, we can see how water plays a role in different religions. While we universally recognize the significance of water for human life, each culture also has its way of symbolizing that value. For many religions and beliefs, water plays a leading role in rituals and practices.
Okay, so mentions of these are found in animism, Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, and Judaism. So we can start with animism on the next slide. So this is a religion of the indigenous people of different regions. So the perception of water in animism is that it's an entity that connects others and creates relationships. Their belief is to honor and respect water as a sacred and something that sustains all life. Their traditional knowledge, laws, and ways of life teach them to be responsible in caring for the sacred gift that connects to all life. So an example of that would be the Congo River containing serpentine gods. And here's an image of a serpentine god. Okay, moving to Hinduism. Hindus place an importance in the physical and spiritual well-being achieved by purity. So the Ganga River runs through northern India, formed by rainfall and the melting snow of the Himalayas. It carries nutrient-rich sediment as it flows, depositing fertile soil along its shores, allowing civilizations to develop and thrive along the waterway for centuries. So this is actually worshipped in the Hindu religion as Mother Ganga. Their belief holds that bathing in the river causes the forgiveness of sins, and the immersion of the ashes of the dead in the Ganga will help the departed soul reach something called moksha, a term for freeing the soul from the cycle of reincarnation. So moving on to the next slide, we can see an image here of the Ganga River. Okay, so in Buddhism, water symbolizes life, the purest form of food, and water is a particular element which nature carries everything together. So they have something called the Paritrana ceremony, which is for protection or safety. And here we can see an image in the next slide of that ceremony, where they're actually harvesting water. Okay, so water in Christianity. Water can also be regarded as holy in Christianity in the ritual of baptism, where a follower possesses his or her faith by bathing in holy water. This symbolizes rebirth in purity, and they also have something called exorcisms, which is a removal of demons from a soul or a location. So this is typically done by using holy water. So here we can see images of both baptism and exorcism on the next two slides. So here we have a baby being baptized. And then here is an image from a movie of an exorcism. Okay. So moving on to the next slide of water in Judaism. So Jewish people believe that humans depend on water for survival. Because of this essential dependence, Jewish sources equate water with life. They have something called mikveh, or a collection of water derived from natural sources. Usually observant Jewish married women are required to dip in this once a month. And once they bathe in this, it's considered restored or pure. So in the next slide, we can see an image of a mikveh. Okay. And finally, we have water in Islam. So in the Quran, water symbolizes wisdom. It recognizes that water is a part of life, that we are made up of, live, breathe, and consume water. So we all may know the story of Prophet Ibrahim and his son, Ismail, who was crying out of thirst as a baby, and how his mother ran between Safa and Marwa 7 times to look for water. And as water sprouted out of the ground, that became known as Zamzam water. So if we move to the next slide, we can see an image of what Safa and Marwa looks like today. Okay, and last but not least, we cannot speak about water without mentioning Hazrat Abbas. So of course, in the Shia sect of Islam, the Euphrates River has religious significance. And here we can see an image. And that would conclude my presentation. Thank you so much for having me. Thank you so much, Mariam. And you know,
as one of our young leaders, we only hope that this platform serves to provide presentations like these in the future. And I benefited from that presentation, and I'm sure you did too as well, Saud. Yeah, definitely. Although it was a long route coming to Islam, but totally knowledgeable stuff. जो presentation उन्होंने पानी के हवाले से दी, बहुत ज़बरदस्त. Definitely. And moving forward, I have the distinct honor to also introduce, we're nothing without our stalwarts. And so I'd like to introduce Dr. Nuzhat Chiko. She's the Director of Media for the IMI US Board of Directors. She's a long-standing member of the IMI, has served on many roles, has, done many jobs, worn many hats, and she's here to present, a little bit about the channel and the work that she's done, and then also she's going to join us in a few moments. जब तक हम IMI के कुछ शिफा अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डॉक्टर यासिर ने भी बताया था, उसके बारे में हम अपने नाज़रीन को एक दफ़ा दोबारा से don't you think we want to reiterate that? Definitely, no problem. So I think what we should do is share that video with everyone. If you could, tell in your own words. Myself, okay. Yeah. No problem. So, IMI, a global entity for the past 25 years. Let's take a look. आप बताइए ये साइड पे वीडियो चलती रहेगी. No problem. So you carry on. IMI's Dream project is a culmination of the work of hundreds, if not thousands, of people, of members across the world. We really thought that IMI should become a self-sustaining entity, something that's income generating, job generating, something that can serve the community not just for today and not just for tomorrow, but for generations to come. And one of the most vital aspects of this is how we take care of our ailing, of how we take care of our elders. And so IMI has bought successfully 30 acres of prime real estate in Robbinsville, New Jersey. Mm-hmm. And the plan is to have 75% of the acreage dedicated to self-sustaining projects like senior living facilities and inpatient rehab and skilled nursing facilities. All of these, projects that will serve as a way for families of our communities to feel safe sending their elderly, to send their ill loved ones to be taken care of by medical professionals from their own communities, somewhere where I'm sure you and I, we have elderly grandparents and parents, in that we really feel the need for these kinds of things when we don't have them, when we have to send them to hospitals or clinics where some of their basic needs of hygiene, of namaz and prayer and wuzu are not taken care of, taharat. So can you imagine a world where we have nurses and physicians that speak our grandparent languages, that can understand their need for social and physical well-being as well as spiritual. So, we're looking forward to paying off a loan. We've already come up with $1.7 million just in donations and fundraising over the last 12 months. And we're looking to come up with another $800,000 only to pay off the land and then start with investment generating projects. So we're going to break ground within the next few months, and I encourage you all to take a look at our website to read up on the plans, the feasibility of such a project. The other 25%, if I can, elaborate, the 25% will be reserved for IMI's headquarters. So, we are a growing organization. We have, a dozen staff members from around the world. We have this amazing TV channel, and it needs to be housed somewhere. We need a place for our youth wing and our women's wing.
And so 25% of it will be donated, dedicated to headquarters projects, as well as some projects, like an Islamic art gallery, like a library, an auditorium, things that our community really needs. There's organizations across the world that are doing this kind of work, but none like IMI, and none like one with such a backing, with hundreds of, if not thousands of members across the world. IMI does so much work on such a large scale, so many countries. We work with the UN. We have delegates that go to the highest platforms of the world. And I think it's now time for us to, take it to the next level. So I encourage you all to definitely participate in the IMI Dream project. Especially talk about Shifa. You talk about touched upon 25% space for IMI headquarters. उसमें एक part आपका Medics International, MI TV या My TV का भी होगा. My TV, what would ये इसके क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या क्या करेंगे, एक दफा फिर से हम नाज़रीन को बता दें ताकि उनके जहन में क्लियर हो जाए कि what should they be looking for? Definitely. So, My TV will encompass a large scope of projects that IMI undertakes, but also the community undertakes. We envision a channel with science and technology programming, but also infotainment, having, a Saturday morning talk show, having youth take up the role of moving this community forward, of bringing their research home and sharing with people. We have, academics and scholars from across the world. One of IMI's biggest projects is Sadiq International Virtual University, which bi-weekly hosts academics from across the world, from Wales to Australia to Iraq to Iran. So, bringing all of that to one place, having one hub where we can have scientific, medical, sports, entertainment, all in one place. Current affairs, entertainment, infotainment, everything will be there, inshallah. और हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने माजी को दोबारा से टटोलने की कोशिश करें, उसको जांचने की कोशिश करें कि हमारा माजी क्या था. इस्लाम और साइंस को अलग नहीं किया जा सकता. ये हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में पहले ही जो हमारा सेगमेंट था, जिसमें हमने उनके साथ अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के साथ बातचीत की, उनके साथ हमने यही चीज़ डिस्कस की. इस्लाम और साइंस को अलग नहीं किया जा सकता. इस्लाम इज़ द इंसेप्शन, इस्लाम इज़ द बेसिस, और जिसके ऊपर साइंस बेस करती है. साइंस को आप फॉलो करते हुए इस्लाम को फॉलो नहीं करते. इस्लाम को फॉलो करेंगे, आराम से साइंस खुद ही समझ में आ जाएगी. सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू. और ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमारा साथ देंगे. दामे दर में सुखने, जिस तरह से अशर जैदी ने भी कहा था कि आपका साथ हमारे साथ सिर्फ मॉरली या सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होगा. आप जिस तरह से भी साथ देना चाहें आप दे सकते हैं, और इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं. आप सोशल मीडिया पे हमें रीच कर सकते हैं, आप ईमेल्स के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप हमें रीच कर सकते हैं. और आज की हमने ये लॉन्च ट्रांसमिशन जो रखी है माई टीवी की, मेडिक्स इंटरनेशनल टीवी की, वो भी इसी हवाले से थी कि आपको बताया जा सके कि ये इस आज के प्रेजेंट करंट इंफॉर्मेशन एज के दौर में हम एक दूसरे से कनेक्ट किस तरह से रह सकते हैं, और एक दूसरे के करीब किस तरह से आ सकते हैं, और अपनी बात हम आप तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, और आप अपनी बात हम तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं फीडबैक के सूरत में. And, I think it's also an opportunity to, share with everyone that IMI exists in so many countries and so many cities, but it's not just doing charitable projects in these cities. It's bringing people up and bringing people together. So our chapters work on professional development. We provide opportunities for career guidance. We have a very robust career guidance council. We run residency guidance seminars. We host people. We host, junior physicians, providing them clinical opportunities and clinical experience through our NEST program. So, I encourage you all, whether it's your local chapter or getting involved in one of our paraprofessional wings or our professional wings, I encourage you all to
stay connected with IMI. We're only as strong as our connections and our networks. So inshallah, with the support of, and inshallah in the guidance of our community leaders and our elders, we hope to take this great platform forward, and it couldn't have been done without the support of all of you. And finally, I just one last plug. I would be remiss if I didn't mention that please, if you found this program at all beneficial, I do encourage you all to at least support the kind of work that IMI is doing by donating on our website, by credit card or by PayPal. We have imamiamedics.com, through Zelle or Venmo. You can see the details down below on how to donate directly. We also have information on how to donate directly to some of our projects, and just explore the kinds of things that IMI can do for you, because we're here for you, we care for you, and we're here responding to the needs of the community. ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बात की। और जैसा से मैंने पहले भी कहा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और जहाँ भी हमारी प्रेजेंस है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब की हमारे इस चैनल को इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल के नाम से चैनल है, और पूरी इस ट्रांसमिशन में नीचे आपने देखा होगा ये स्क्रॉल जो चल रहा है, इसमें हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस सारी मौजूद है, ईमेल भी है, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, किस तरह से आप हमें अपने डोनेशंस के थ्रू या सोशल मीडिया पे शेयरिंग के थ्रू आप हमें हेल्प कर सकते हैं। डू हेल्प अस आउट एंड वी विल बी टुगेदर, और साथ मिलके हम उठेंगे तो पूरा माशरा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और आज की इस नशिस्त से सऊद ज़फ़र को, शिफा को इजाज़त दीजिएगा, और अपनी दिल ज़रूर खुले रखिएगा। Thank you so much, and inshallah we'll see you again very, very soon. Inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.